when we explicitly now from the theory that which variable is causing which variable, and then we model this relationship based on a certain theory. So we call it regression. And when we are not sure, when we are not clear, okay, when we have two variables of interest, that which variable is causing which one, and whether the relationship is from both sides, one variable is causing the second, say, causing the first one, or whether it's the first one which is causing the second one, or both of the variables are causing each other. So for that, it's the causation kinds of studies or modeling is the most appropriate way to conduct these kind of studies. I hope now you can differentiate between these two. Of course, Taqi Khan, amazing. This is, of course, the summary of it. That. Thank you very much. Now, if it is very clear to everyone, so we may proceed, please. Sorry, I thought she was my mic off. Oh, sorry. No, Nazli Gul. So you didn't answer my question. I'm not sure what was your question because I'm getting so many different things. So probably at the end, we can spare some time for obvious reason, say 15 or 20 minutes or 25 minutes, and where you can ask your questions, and I'll be particularly trying to answer your questions. Okay, Sayyid Mudassir Shah, thank you very much for the compliment. Ji, Zishan Malik, it's causation, it's a very much different from the correlation, because over there in correlation we're just interested in the strength and direction. यहाँ पे भी अगर आप देखें, we are not direction यहाँ पे है, but explicitly another thing we can add, which is the part of a particular component of the regression. We are also interested in which variable is causing which one and to what extent. To extent wala jo hai, it's partially a characteristic of the correlation, and which variable is causing which one, it's a partial characteristic of the regression. तो ये आप कह सकते हैं कि दोनों की partial characteristics वो यहाँ पे वो causation में वो है. नहीं, causation, correlation is different from the causation. Okay, so if everyone is clear, Subi, may I proceed, please? Generalized least square method, it's one of the ways of estimating the parameters of the model, and it's one of the way to estimate the parameters of the model under the category of regression. There's so many different ways of calculating or estimating the parameters of the model, and generalized least square method is one of the way of it. नहीं खैर है, मैं साइड बाय साइड वो करता रहूंगा, चाहे कोई नहीं इशू. Yes, it is Rizwanullah. Yeah. Thank you very much. You made it easy for us. Its causation means dependency plus direction. Yes, of course. Amazing. Nasser Khan, thank you very much. Okay, so we may proceed. Yes. Next. The next round is, how do we model quantitative relationship?
Now, we just studied what in how many different ways the quantitative relationship can be studied, and now how in how many different ways quantitative relationship can be modeled. Okay, so whenever we want to model uh, or develop a relationship between or among the variables, it must be based on some theories. यानी ऐसे नहीं कर सकते कि कोई भी आपके माइंड में कोई वेरिएबल, दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स आए और आप उसको वो कर दें. सो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम थ्योरी, क्योंकि उसमें एक मसाइल का सामना हो सकता है. इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप द रेनफॉल इन 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 द यूएस और द वीट प्रोडक्शन इन इंडिया, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये दोनों एक दूसरे के साथ, अगर हम दोनों वेरिएबल्स का डेटा लें, हिस्टोरिकल डेटा से फॉर द लास्ट 30 years, it's quite possible that we get a similar kind of trend. So if we get the similar kind of trend, though both of the variables are not related with each other, the rainfall in the USA and the wheat production in India or Pakistan, these are completely two different kinds of things. But if these two variables have the same kind of trend, it's quite possible that you will be getting this statistically significant relationship for these two variables. So हमें समझना होगा, when we want to model two variables of interest, it must be based on certain economic theories or social theories or कोई भी underlying. So we must have the underlying theory. When we want to model two variables of interest, for example, मैं आपको कह दूं कि इंडिविजुअल लेवल पे लोगों के एक्सपेंसेस या लोगों के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, लोगों के जो कंजम्पशंस हैं, वो किससे इन्फ्लुएंस होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस फॉर इट, and one of the explanation, probably the most appropriate or economic explanation for it, is the earnings of the individual. So individual consumptions are expenditure that depends on the individual earnings. And this is what we know from the economic theory. There might be certain other explanations for it. For example, the size of wealth depends. It also influences the expenditures of the household or individuals. तो ये अगर आप देखें, जी बिल्कुल ऐसी ही है. तो हमें इसके लिए whenever we want to model two variables of interest, it must be based on some theoretical importance of it. There must be some underlying theory of it कि किस बुनियाद पे इन दो वेरिएबल्स की कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में मॉडल कर रहा हूं. जी, दिस बड़ा उस्मान गनी साहब, आपने ठीक कहा. इट्स दिस टेक्निकली वी कॉल इट स्प्यूरियस रिग्रेशन, लेकिन इसलिए मैं अब इस लेवल पे नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि हमारे पास बहुत सारे दूसरे डिसिप्लिन के भी लोग हैं. यानी जब आप दो वेरिएबल्स को लें रेंडमली, उसको सेलेक्ट कर दें और उसकी स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग कर दें, रिलेशनशिप मालूम करें और उसके रिजल्ट्स आए और इसके रिजल्ट्स की जो हेल्थ है, टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन रिलाई ऑन दीज रिजल्ट्स, तो वो जो है वो स्प्यूरियस होगा अनलेस वी हैव अ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ दीज वेरिएबल्स. तो वो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे इस केस के अंदर ऐसे हो सकता है कि यूएसए के अंदर कितनी रेनफॉल हुई है पूरे एक साल के दौरान या पूरे पिछले 30 साल के दौरान, और कनाडा के अंदर या इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर वीट की जो प्रोडक्शन है वो कितनी हुई है. अगर दोनों के अंदर एक कॉमन ट्रेंड हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि रिलेशनशिप आपको स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट दिखे. लेकिन वो whether these relationship the whether we can rely on these results or otherwise, तो जब तक अंडरलाइंग थ्योरी नहीं होती वो हम उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते. ठीक हो गया. So when we want to model two variables of interest or more variables of interest, whether it is in the form of causation or whether it is in the form of regression, so it must have some underlying theoretical importance of it. जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ वो शेयर किया कि the most classical example, which is I guess it's understandable for all the participants, is the income consumption relationship model. आप में से लोगों के डिसिप्लिन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इस बात की अंडरस्टैंडिंग उसके पास के हाँ होगी कि आपकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं मोस्टली दैट डिपेंड्स ऑन योर अर्निंग लेवल. तो जोन से लोग ज्यादा वो कमाते हैं ऑन एवरेज वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं या ज्यादा उसकी एक्सपेंसेस होती हैं. जोन से लोग थोड़े कमाते हैं ऑन एवरेज वो उनकी कंजम्पशन लेवल वो थोड़ी होती है.
जी, you can go for two or more variables. There is no hard and fast rule that for all the times you can model only two variables. जैसे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के हमने बात की, सो वहां पे हमारे पास we have more explanatory variables than a single dependent variable. So it's quite possible. जी, अच्छा जी, अब हम दोबारा coming back to the same point. How do we model quantitative relationship? So the first thing that we get help from the theory. If there is any underlying theory to model two variables or more variables of interest, so this is one of the possible way of doing it. The other possible way of doing it is the statistical techniques. For example, if you are interested in two or more variables और आप इसकी मॉडलिंग कर रहे हैं रिग्रेशन या कॉजेशन या किसी दूसरी फॉर्म में, लेकिन यू डोंट हैव द अंडरलाइंग थ्योरी ऑफ इट, और या कोई एक्सप्लिसिट थ्योरी वो नहीं है आपके पास, तो वहां पे हमारे पास दो और किस्म के जो प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम कौन सी वेरिएबल्स को अपने मॉडल के अंदर ऐड करेंगे, कौन सी वेरिएबल्स को मॉडल के अंदर नहीं रखेंगे. सो द फर्स्ट वी कॉल इज, दोनों स्टेटिस्टिकल प्रोसेसेस हैं या टेक्निक्स हैं. द फर्स्ट वी कॉल इज द मार्जिनल और इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल. मार्जिनल या इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं आपको वो पहले वाले एग्जांपल के साथ इसको लिंक करता हूं, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि लोगों की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो उनके अर्निंग्स के ऊपर तो डिपेंडेंट है. अब आपके माइंड में आ रहा है कि भाई सिर्फ एक्सपेंडिचर, इट्स क्वाइट पॉसिबल द टू इंडिविजुअल दे हैव द सेम लेवल ऑफ इनकम बट देयर एक्सपेंसेस में बी डिफरेंट. तो वो कौन से और वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इसके एक्सपेंसेस में, इनके एक्सपेंडिचर्स में वो वेरिएशन आ रही है. मैं तो सा माजबीन शिरानी. अच्छा, मैं साइड बाई साइड में, अगर आप, मेरे ख्याल में आप सही तरह से सुन नहीं पा रही है मुझे, मैं इंग्लिश में भी और साथ में उर्दू में भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अपने लेवल पे मैं बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि दोनों को साइड बाय साइड वो आपके साथ वो रखूं मेरे ख्याल में. और दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में इंग्लिश तो इतना, यानी ये तो लिटरेचर हम नहीं स्टडी कर रहे हैं या कोई दूसरी वो चीजें वो नहीं है मेरे ख्याल में. इट्स सो इजी, बट एनी हाउ ये मैं साइड बाय साइड आप लोगों के साथ जो है वो उर्दू में भी उसको कर रहा हूँ. अच्छा जी, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, मैं आप लोग को फिर से थोड़ी सी आपकी जो मेमोरीज है उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ. हाउ डू वी मॉडल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप? अच्छा, इफ यू वांट टू मॉडल टू वेरिएबल्स आर मोर वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट, और आप जी जबरदस्त है, आप लोग जो एग्जांपल शेयर कर रहे हैं ऑल ऑफ देम आर रेलेवेंट, और आप लोग जबरदस्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, माशाल्लाह. जी, तो हाँ, इसमें टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वो इजी बना दूँ. मैं अभी फैक्टर एनालिसिस के ऊपर आ रहा हूँ, आप लोगों को अंदाजा उसका हो जाएगा. अच्छा जी, सो हाउ डू वी मॉडल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप? कोई भी दो वेरिएबल्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उनकी रिलेशनशिप में, तो एक तो ये कि उसके साथ वी नीड टू फाइंड ए रेलेवेंट थियरी, कि इस थ्योरी से आप लोगों को पता चलेगा कि विच वेरिएबल इज कॉजिंग विच वेरिएबल, या जौन से वेरिएबल का रोल उस थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में क्या है. तो आप उस थ्योरी के बेस पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिफाइन करते हैं, और उसी के बेस पे हम अपनी एनालिटिकल जो फ्रेमवर्क है वो डिजाइन करके उसमें वेरिएबल्स को प्लेस कर लेते हैं कि अब इस वेरिएबल को या इस जो फिनोमिना है उसको कहाँ पे हम प्लेस कर दें, और इसकी जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से वो बन रही है. सो एनी व्हेन वी आर इंटरेस्टेड टू मॉडल two variables of interest, we need to know about its theoretical importance, and if we are able to find any relevant theory, so that will help us that which variable is causing and which variable is an effect. For example, if we are going to model two variables in the form of a cause and effect relationship, अगर वो नहीं है आपके पास, so there are some other techniques, say statistical techniques, जिसमें marginal or incremental contribution of variable, this is one of the way.
of doing it. इसमें ये है, जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल के अंदर ऐड किया कि it's quite possible that two individuals have two families even. They have the same level of earning, but still there is a difference in their expenses. There is a difference in their household level expenditures or individual level of expenditures. तो theoretical importance से तो हमें ये पता चला कि इनकम एक ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल है, उसको हमने ऐड किया. अब व्हाट आर द अदर इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो हम इस मॉडल के अंदर ऐड कर सकते हैं? बिकॉज though for some of the households, for some of the individuals, we got the same level of earning, but still there is a difference in their level of expenditures. तो उसको हम समझने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? फिर आपके माइंड में आया कि हाँ, ये हाउस होल्ड लेवल की जो साइज है उसमें डिफरेंस हो सकता है. एक बंदा जो 50,000 रुपए कमाता है और इसकी जो एवरेज एक्सपेंसेस पर मंथ है, सपोज करें वो 40,000 है, और दूसरा बंदा भी 50,000 रुपए कमा रहा है और इसकी जो एवरेज एक्सपेंसेस है फॉर एग्जांपल वो 25,000 है. तो दो द अर्निंग लेवल इज द सेम बट देयर इज अ डिफरेंस इन देयर एक्सपेंडिचर्स. तो क्या वजह हो सकती है उसकी? तो उसके लिए आपने एक और वेरिएबल जो है आइडेंटिफाई किया कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डू प्ले देयर इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन उसके अलावा आपने कहा कि इमीडिएट हाउस होल्ड लेवल पे उसकी जो फैमिली साइज है, एक के हाउस होल्ड साइज में जो है वो 4 लोग हैं, एक के हाउस होल्ड साइज में जो है वो 7 लोग हैं. तो जाहिर सी बात है जो 7 वाले हैं ऑन एवरेज उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा होनी चाहिए. फिर आपको पता चला कि भाई हाउस होल्ड size, maybe it's quite possible that the household level is the same, the income level is the same, but still we found a difference in the expenditures across the household expenditures. तो फिर वहां पे हमें पता चला कि भाई दूसरी वेरिएबल्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और वो ये है कि ये जो हाउस होल्ड है वो कहाँ पे वाक़या है, ये रूरल में है या अर्बन में है. ऑन एवरेज रूरल के अंदर लोगों की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो थोड़ी होती हैं, because people have access to so many different opportunities in free. For example, access to free clean drinking water, or access to shelter हो सकते हैं, घर लिविंग जिसमें वो रह रहे हो वो उसका अपना हो, किराए पे ना हो. ट्रांसपोर्टेशन जो इसकी एक्सपेंडिचर्स हैं वो थोड़ी होती हैं. एसेट्स उनके पास दूसरे वो जो है वो मौजूद होती हैं. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. तो जब आपके माइंड में वो दूसरी वेरिएबल्स आ जाती हैं, बट यू स्टिल यू डोंट नो वेदर यू नीड टू ऐड दीज वेरिएबल्स इनटू योर मॉडल और अदरवाइज, तो आप क्या करते हैं? वन बाय वन उसको ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑलरेडी आपने एक्सपेंडिचर और अर्निंग का डेटा तो लिया हुआ है वहां पे. अब आप समझते हैं हाउस होल्ड साइज को मैं शामिल कर दूं कि ना कर दूं. जबरदस्त है ये फ्री वेजिटेबल्स उनके पास, जबरदस्त है. स्पेंडिंग हैबिट्स अमेजिंग. या दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑफ कोर्स. ओके, तो आप इसको ऐसे कर दें, हाउस होल्ड साइज को आप ऐड कर दें. अब देखें व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस वेरिएबल इन द टोटल मॉडल. अगर ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप इसको ऐड कर दें. अगर नहीं है तो आप इसको ड्रॉप कर दें. इसी तरह जब हमने कहा कि भाई जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, वेदर अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड इज लोकेटेड इन अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज, तो जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है उसको हम ऐड कर दें, तो क्या उससे जो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड लेवल एक्सपेंडिचर्स हैं उसके अंदर वेरिएशन की एक्सप्लेनेशन आ रही है कि नहीं है? तो आप उसको ऐड कर दें, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस पे उसको ऐड कर दें. अगर वो इसकी कंट्रीब्यूशन बन रही है सो इट्स वेल एंड गुड. अगर वो नहीं है तो आप हटा दें. दिस इज हाउ वी डू. We include variables based on the statistical significance of it, and this is what we call as the marginal or incremental contribution of variables. ये वाला यहाँ तक हो गया. Now coming to the factor analysis. अगर आप variables of interest आपके पास हैं किसी एक okay, thank you very much. अगर आपके पास है वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट, सो मेनी डिफरेंट वेरिएबल आपने एक साथ लिया हुआ है कि भाई हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स होने चाहिए. दो के कुछ की थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है, कुछ की नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टिकल प्रोसेस और स्टैटिस्टिकल मेथड को बुनियाद बना के कौन सी वेरिएबल्स या सेट ऑफ वेरिएबल्स को मुझे अपने मॉडल के अंदर लेके आना है. आपने क्या किया? डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लगा दिए, एज भी ऐड कर दिया, हाउस होल्ड की जो एज, हाउस हेड ऑफ द हाउस होल्ड की जो एज है वो भी आपने ऐड कर दिया. हु इज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मेल है कि फीमेल है, वो भी आपने ऐड कर लिया.
आपने जो है वो रूरल में है, अर्बन में है, वो वेरिएबल भी आपके माइंड में है, वो भी आपके पास है। आपके पास अर्निंग भी है, आपके पास हाउस होल्ड साइज का भी डेटा है, और दूसरे जो सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं उसको भी आपने, फाइनेंशियल दूसरे वेरिएबल्स हैं आपके पास। Now, आपके पास बहुत सारी वेरिएबल्स हैं, एंड नाउ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि which set of variable will be most relevant in this particular case. तो फैक्टर एनालिसिस इज यूज्ड। आप सारे वेरिएबल्स एक साथ लगाते हैं और उसकी फैक्टर एनालिसिस वो करते हैं। फैक्टर एनालिसिस से आपको आइडेंटिफाई होता है कि कौन से सेट ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इट यू कैन टेक इनटू अकाउंट से सेट ऑफ वेरिएबल्स। इस फैक्टर एनालिसिस से हमें आइडेंटिफाई हो गया कि आपके जो इनकम है, हाउस होल्ड साइज है, और जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, से उसमें से एक इंफॉर्मेशन कि वेदर पर्टिकुलर हाउस होल्ड इज लोकेटेड इन रूरल और अर्बन एरिया, ये तीन वेरिएबल्स ज्यादा उसकी जो है वो स्कोर बन रही हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स। तो इसको बुनियाद बना के आपने ये तीन वेरिएबल्स एक साथ एक मॉडल के अंदर वो ऐड कर लिए। So this is another way of doing it. I hope you got my point. Now, finally, what we can conclude about this slide is that to model the quantitative relationship, we can take the help of the underlying theories, which explains the importance as well as the roles of variables. If it is not explicitly prevailing, then we can use the statistical processes or techniques जो जिसके बेस पे हम सेट ऑफ वेरिएबल्स को या वेरिएबल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको प्लेस कर सकते हैं कि वेदर कहाँ पे हम इसको प्लेस कर दें। तो ये हमारे पास दो जो है वो प्रोसेसेस हैं। Whether when we want to use a variable or set of variables, we may take the help of relevant theory to explain the role of these variables in a particular situation, or we may take help of the statistical processes and techniques, just like just I mentioned these two techniques, the marginal or incremental contribution of the variables, जहाँ पे we include the variables one by one in a particular model and see the statistical importance of it. And then based on that statistical importance, we decide whether we need to keep a particular variable within the model or outside of the model. If we have a set of variables and all together we want to know about these variables, whether we need to include these variables or some of the variables in a particular model. So we do the factor analysis, and based on the score of these set of variables, we consider whether we need to tag which kind of variables or set of variables to be used in this model. तो ये आपके पास जो है दो किस्म के explanations आ गई, on the basis of which we may decide whether how to model a particular relationship, and what is the role of a theory or particular statistical techniques which can help us designing the relationship between and among the variables. G. If you are clear with it, break. Okay, that's great. It's great. Factor analysis में ज़्यादा just the use of factor analysis. I'm not going to discuss the technicalities of the factor analysis. ना हम उसमें वो ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फैक्टर एनालिसिस को भी यूज किया जा सकता है इस पर्पस के लिए, when we have the set of variables but we don't know कि which set of variables इसमें से कौन से वेरिएबल जो है वो important है, and we need to include these variables as a set of explanatory variables or otherwise. तो उसमें हम जाते हैं और वो इस मेथड से हमें ये अंदाजा होता है, इसका पता चलता है कि कौन से सेट ऑफ वेरिएबल्स को हमने यूज करना है अपने मॉडल के अंदर. सो वी नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ justification on the basis of which we are going to include variables in our model. So it must be based on the theoretical importance of it, or we must have used some statistical process or methods which gives us the positive signals about these set of variables to be used
these variables within the model. तो इसके लिए हमें जो है वो मालूम होना चाहिए. Yes. जी. Ha. So we may proceed to the next slide because we are clear with these kind of things. Okay. Next is now the next is how do we model behaviors? इसमें हमें जब when it comes to the quantitative models तो उस मॉडल को तो एक तो हमने कहा कि भाई वहां पे इसकी मॉडल के अंदर कौन से वेरिएबल्स हैं, उसका रोल क्या है, कौन से सेट ऑफ वेरिएबल्स को हमने ऐड करना है, कौन से को नहीं करना, वो हमने बताया कि वहां पे उसकी या तो थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस के बेस पे हम ऐसे कर सकते हैं या हम किसी स्टेटिस्टिकल प्रोसेस टेक्निक्स के थ्रू इसको ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन से सेट ऑफ वेरिएबल्स को हम रख रहे हैं यहाँ पे. आगे जाके जो है अगर हम एक क्वांटिटेटिव मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं तो उन मॉडल्स के अंदर जो है उसके फीचर्स क्या हो. तो द फर्स्ट वन इज मॉडल सीक्स इट सीक हेल्प फ्रॉम द थ्योरीज. कोई भी रिलेशनशिप अगर हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के अंदर एक उसकी रिलेशनशिप को मॉडल कर रहे हैं तो नहीं साइमगुल बहुत सारी जगहों पे theories are established but you know it's in case of social sciences not in case of science. In case of social sciences it's quite possible that some theories may hold in some particular countries or in some particular context and some theories might not hold in other countries context and there is a lot of explanation for it लेकिन हम उस डिटेल्स में जो है वो नहीं जा रहे. थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि बस ये हमेशा एस्टैब्लिश है. देयर आर सर्टेन थ्योरीज जो किसी एक कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में काम कर जाती है लेकिन दूसरे कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं करती. फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल आप लोगों को दे देता हूँ उससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा. If we look at to the development economic development model of the USA, they initiated the growth economic growth based on the trickle down theory जिसका मतलब ये होता है कि आप अपने कंट्री के अंदर जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको फैसिलिटेट करें. जब आप इसको फैसिलिटेट करते हैं तो उसके फैसिलिटेशन से ये होगा कि खुली दिल के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे. जब वो इन्वेस्टमेंट कर जाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट होगी, आपकी जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाएगी. इस तरह से वो हो जाएगा. Now we did the same experiment over here in यहाँ पे हमने कर ली 60s में पाकिस्तान के अंदर कि हमने कैपिटलिस्टों को वो कर दिया, फैसिलिटीज दे दी एंड बेस्ड ऑन दैट हमें क्या मिला यहाँ पे. अगर आप लोगों को याद हो पाकिस्तानी हिस्ट्री में एक टर्म यूज होता है कि 22 खानदान. तो 22 खानदान वो थे जिसको फाइनेंशियल सेक्टर के तकरीबन 70% शेयर्स उनके पास आ गए. तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक थ्योरी एक मॉडल एक इंटरवेंशन जो किसी एक कंट्री के अंदर वो पॉपुलर हो और वो काम कर रहा हो. So it's quite possible that the same model, if replicated in another place, in another region, might not be working, or sometimes we may be having adverse kinds of results of it. तो ये possible है. ठीक है. तो थ्योरी का मतलब सम मोस्टली यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में वी जस्ट वांट टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर थ्योरी इज वर्किंग in a particular context or in a particular country's context or region context or otherwise. ठीक हो गया. Okay. So how do we model behaviors? इससे पहले जो स्लाइड्स हैं अगर आप लोग देखें मैं फिर से आप लोग को
आपके लिए शेयर कर लेता हूँ कि हाउ डू वी मॉडल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। इसमें हमने कहा एक, या तो हम थ्योरी से हेल्प लेंगे या किसी स्टेटिस्टिकल प्रोसेस या टेक्निक्स की हेल्प लेंगे, जिसके बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि वेरिएबल्स का रोल क्या होगा और उन वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल्स को मॉडल के अंदर होना चाहिए या कौन से वेरिएबल्स को मॉडल के अंदर नहीं होना चाहिए। सो वी मस्ट हैव अ थ्योरेटिकल और एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, आर जस्टिफिकेशन ऑफ इट। अच्छा जी। सो जब हम इकोनॉमिक मॉडल्स, सॉरी, जो क्वांटिटेटिव मॉडल्स, हम वो वेरिएबल्स को हम डिफरेंट मॉडल्स की शक्ल में लेके आते हैं, तो किस तरह से वो हम उनको मॉडल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई इससे पहले वाली स्लाइड्स के साथ, मॉडल सीक्स हेल्प फ्रॉम द थ्योरीज। द फर्स्ट थिंग कि इट हेल्प्स फ्रॉम द थ्योरीज के सीरीज से हमें पता चलेगा कि इन वेरिएबल्स की जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी रोल क्या है और उनको हमने कहाँ पे प्लेस करना है, और उन्हीं के नतीजे में हम क्या करेंगे, उन वेरिएबल्स को अकॉर्डिंगली क्वांटिटेटिव मॉडल्स के अंदर सेट कर लेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल समटाइम्स वी हैव सो मेनी डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो उसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दोबारा से अपने एग्जांपल को के ऊपर लेके आए जी। फॉर एग्जांपल एटॉमिक थ्योरी व्हिच वाज प्रूव्ड इनवैलिड to discovery of a small particle that it's has importance. Yes, of course. हाँ, शाहीन, ये थैंक यू वेरी मच। ये आपने साइंस से एक इंस्टेंस लेके आए कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कुछ थीरीज ऐसी भी हो सकती हैं व्हेन वी एड एडिशनल इंफॉर्मेशन, or when we have access to new information, or when we have access to new technologies, so it's quite possible कि हम इसको nullify कर दें। तो क्वाइट पॉसिबल ये साइंटिफिक थीरीज में भी ऐसे हो सकता है, और सोशल साइंसेस में तो ये कॉमनली हो जाता है। अच्छा जी। So what we do, we focus on the most important aspects or dimensions of a theory. अगर आप देखें, there might be so many different ways to explain variation in expenditures across the families, but probably economic explanations and financial explanations might be the most relevant explanations of it. हो सकता है एक ही चीज को अगर आप एक, देयर माइट बी डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस ऑफ इट, हो सकता है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज उसकी, लेकिन हम जो है एक जो मोस्टली इंपॉर्टेंट आज के एस्पेक्ट्स हैं या उसके डायमेंशंस हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको फ्रेम कर रहे हैं। एक चीज को मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। All we do to test the theory. Sometimes the purpose is testing a theory and sometime to develop a theory. ये लेकिन वो qualitative researches में वो हो जाता है। Mostly what we do in quantitative theories is just we try to test the theories and conduct deductive researches. So when we want to develop a quantitative model, what we do, we take the help of the relevant theories. We focus on the most important aspects or dimensions, and then we develop a model, a quantitative model of it. For example, दोबारा से अगर हम यहाँ पे वो आ जाएं, एक मिसाल के थ्रू ये समझना जो है वो ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप देखें, coming back to not coming back, it's a new example and the example is relevant to the production. अगर कोई बंदा है जो प्रॉफिट पर्पस के लिए प्रोडक्शन करता है, तो what is the purpose of production? The purpose of production is to maximize profit from the processes of production. यही होता है ना, लोग different, they perform different kinds of activities and their purpose is to make money from these kinds of activities, and particularly in economic context हम ऐसे वो कर लेते हैं। तो if that is the situation, तो उस context में हमें चाहिए बहुत सारे relevant information. If the purpose of production is making money or maximizing the profit, then what to produce and how to produce and what should be the price of whatever you are going to produce. These are the most important variables which must be taken into account, because all of these are relevant and have an effect on the profit maximization process.
कोई भी आप इंस्टेंस, कोई भी दूसरा इंस्टेंस यूज कर सकते हैं, किसी भी दूसरे डिसिप्लिन से आप कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। लोग जो है वो डिफरेंट, दे परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई क्या कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग दीज काइंड्स ऑफ सर्विसेज, आर प्रोड्यूसिंग वेरियस गुड्स। मकसद यही होता है कि वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा कर दे। तो उसके लिए जो है वो समझना जरूरी है कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन हेल्प दिस प्रोड्यूसर्स टू अचीव देयर करस्पॉन्डिंग गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये यहाँ पे जो है वो उसी से आ जाता है। तो इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास रिलेवेंट आ जाती है कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो, ये प्रोडक्शन आप कहाँ पे करें। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के हवाले से हम डिसाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे पेशावर में करें या स्वात में करें। वहाँ पे करने लगाने, प्रोडक्शन प्लांट लगाने का फायदा ये होगा कि आप टैक्स एग्जम्पशन हो जाएगी वहाँ पे, यानी टैक्सेस से जो है आप बच जाएंगे। अच्छा जी, एम्प्लॉयज कितने रखेंगे वहां पे? थोड़े रखेंगे, ज्यादा रखेंगे? थोड़े रखने से अगर आपकी प्रॉफिट ज्यादा हो रही है थोड़े रख ले, ज्यादा रखने से अगर आपकी प्रॉफिट ज्यादा हो रही है तो ज्यादा रख ले। ठीक है। तो these are the things which are where we are taking the help from the theory. Theory gave us an explanation. When economic activities are performed, people performing these activities are for the purpose of profit maximization. When it comes to the profit maximization, what are the important variables which must be taken into account to maximize the profit, to help the producers to gain the ultimate goals of production? ऐसे होगा. Now, if it is clear, so we may proceed. If it is not, so I can explain it for you once again. Gee, number of employees depends on the marginal productivity. And yes, we can take the help of different kinds of tools and instruments on the basis of which we can decide okay, what should be the optimal number of employees, what should be the optimal number of output, what should be the uh, optimal production size overall, where to produce and how to produce kinds of things. So we can take help from different techniques and tools on the basis of which we can decide about these different kinds of economic जो arrangements हैं. जी, अलग थ्योरी प्रेजेंट है. एक ही सिचुएशन की एक्सप्लेनेशन बड़ी डिफरेंट हो सकती है. फॉर एग्जांपल आप सोशल साइंसेस के कॉन्टेक्स्ट में सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन उसकी डिफरेंट हो सकती है एक सिचुएशन की. फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन को ले, एहसास महरूमी या गुर्बत. अब इकोनॉमिक के तनाजुर में अगर आप इनके देखें, इनके अपनी इकोनॉमिक रीजंस हो सकती हैं. अगर सोशियोलॉजी में ले तो आप वहां पे जो है वो उसके और एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं कि सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में. साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ले तो इट्स क्वाइट पॉसिबल इसके एक और एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि व्हाई द पुअर पीपल आर पुअर. अगर इफ वी ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन विद इन द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, probably we may tax different set of variables. If we try to understand this in sociological context, वो different reasons हमारे पास वो हो सकती हैं. If we try to understand this same question within the political economy context, इसकी explanation different हो सकती है. That is why we must know कि एक explanation जो हम provide कर रहे हैं उसका context क्या है. We are trying to answer this question within the context of economics or within the context of political economy, within the context of sociology or within the context of psychology. तो ये बड़ी important होती है. मेरी बात की समझ लग रही है आपको? That is why when we find answers to a research question, it must be grounded in a very particular context. If all the set of variables are economic variables and you try to explain economic behavior within the set of economic variables, तो वैसे होगा. अगर आप दूसरी वेरिएबल्स भी सोशल वेरिएबल्स उसमें ऐड कर रहे हैं या साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स उसमें ऐड कर रहे हैं
So this, you are trying to understand a particular behavior, which is economic behavior, but you are trying to determine this economic behavior within the set of social variables, which takes into account social, economic, political, and psychological variables. So ये बड़ा important है ये इन चीजों को समझना. जी, वो हो सकता है, उसकी मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ इट. लेकिन यस, इट डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च अप्रोच, योर रिसर्च टेक्निक, और सेम डेटा से जो है यू मे गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजल्ट्स. मैं आप लोगों को समझा देता हूँ. अगर आप जो है आपके पास एवरी अर्निंग का डेटा है, पूरे आप जितने भी लोग हैं, इसको एक सैंपल के तौर पे अगर मैं लूं, और इसमें से जो है वो एज का डेटा आप लोगों से वो ले लूं, तो एज की कैलकुलेशंस में, फॉर एग्जांपल, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन द एवरेज एज ऑफ दिस क्लास, तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि सिंपल अरिथमेटिक मीन से कैलकुलेट कर दूं, सब लोगों की एज रिकॉर्ड कर लूं, फिर उसके बाद उसके नंबर पे डिवाइड कर दूं, और एक एवरेज एज आप लोग के पास आ जाएगी. नाउ दिस एवरेज इज, ये एवरेज है, एंड इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एवरेज एज ऑफ दिस क्लास. लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी है, ये भी है कि इसमें अगर आउटलायर्स हैं, कोई थोड़ी उम्र के लोग हैं या बहुत ज्यादा उम्र के लोग हैं, तो इससे पॉसिबिलिटी ये है कि ये एवरेज उससे इन्फ्लुएंस हो. अब मैं चाहता हूं कि इस इन्फ्लुएंस से ये आजाद हो जाए, या कम, ये इन्फ्लुएंस थोड़ा हो जाए. तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि भाई दूसरा कोई टेक्निक एवरेज का यूज कर सकता हूं, उसे ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन इससे थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करके मेरे पास एक दूसरी एवरेज वैल्यू जो है वो निकल आ सकती है. तो यस, आप जैसे आपने कहा कि which kind of average I'm interested, whether I want to show it over status or under status, and based on that I will select a technique and it will give us average information of that data set. जी जी बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल. Okay, so if everyone is okay with it, so we may proceed, please. Okay, so we may proceed, please. Okay, thank you. Okay, okay. Now, what is the most important things by modeling economic behaviors or modeling social behaviors? What is the important thing? इसमें दो components की जिक्र तो हमने कर ली. Whenever we want to model a relationship, it must be based or it must be backed by some theories, and we need to take into account the most important aspects within a theory, within a particular context, के उसके साथ वो variables अपने model के अंदर add कर सके. अच्छा जी, अगर एक थ्योरी जो है वो आपकी हेल्प कर रही है कि वो आपको डायरेक्शन का भी बता रही है, और साथ में जो है मैग्नीट्यूड्स, एस्टिमेट्स के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, सो दैट इज वेल एंड गुड. When we model an economic relationship between and among the variables of interest, तो एंड पे हमें क्या करना होगा? फॉर एग्जांपल, थ्योरी सजेस्ट कर रही है कि ऑन एवरेज हायर अर्निंग से हायर एक्सपेंडिचर्स होनी चाहिए. इफ दैट इज द सिचुएशन, तो थ्योरी से हमें हेल्प मिला कि भाई साइन पॉजिटिव होना चाहिए. When ऑन एवरेज अर्निंग के अंदर इजाफा होने से ऑन एवरेज एक्सपेंडिचर्स के अंदर इजाफा होना चाहिए. दिस शुड बी द, दिस व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द थ्योरी. तो थ्योरी से पता चला कि भाई बोथ ऑफ द वेरिएबल्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड विद ईच अदर. एक में इजाफे से दूसरे में इजाफा होगा, और साथ में मैग्नीट्यूड का भी बता रहा है, साथ में मैग्नीट्यूड की से भी हेल्प हो रही है. वो मैग्नीट्यूड की हेल्प किस तरह से हो रही है? हमें पता चल रहा है कि भाई the extent to which the expenditure should respond to income, uh, ये जो है ये वन बाय वन नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वट एवर यू आर गेटिंग एज एन एडिशनल इनकम, इट शुड नॉट बी entirely transmitted as a transferred as an expenditure, because it's a general behavior of the people. Whatever you are getting as an additional income,
आप लोग क्या करते हैं, जब भी आप लोगों के पास इजाफी पैसे आ जाते हैं, आप सारे के सारे उसको चैनलाइज नहीं करते अपनी एक्सपेंसेस के लिए। रैदर आप लोग क्या करते हैं, आप उसको अपने पास रखते हैं, उसमें से कुछ एक्सपेंसेस के लिए अलाव करते हैं, कुछ आप अपने पास सेव कर लेते हैं। सेविंग से फर्दर या तो कंज्यूम करते हैं, या एक्सपेंसेस में लेके जाते हैं, या सेव कर ले या उसको इन्वेस्टमेंट में लेके जाते हैं। तो अब थ्योरी से हमें हेल्प मिल रहा है कि भाई इन दो वेरिएबल्स को अगर आप मॉडल कर रहे हैं, सो एन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि साइन शुड बी पॉजिटिव, उससे उसका पता चला। और मैग्नीट्यूड जो है, यस ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच नबीला, probably you are from the economics background, that is why you have exactly modeled it. So thank you very much, but we do have some other the teachers from other backgrounds, so that is why I need to provide a proper explanations to them. Okay जी, तो यहाँ से अगर theory से पता चल रहा है कि भाई साइन क्या होगा, तो आप when it comes to the empirical models, end of the day you can compare the signs with the theory, and you can compare the magnitudes with the theory. If it is according to a theory, very good, and you have done your job very well. But if something is wrong, if the sign is not matching with the theory, or what is proposed by a particular theory or underlying theory, or if the magnitude is not matching with it, then what we need to know a proper explanation why it is not happening. The theory is proposing a positive sign while we are getting a negative sign. The theory is proposing this kind of magnitude, but the whatever magnitude of variables we do have, it's other than that. So we need to know a proper explanation of it. Okay. So how do we understand, and how do we calculate the statistical health of an economic of a quantitative model? तो कैसे वो कर लेते हैं? तो उसके लिए जो है हमें दो चीजें जो है वो दरकार होती हैं. द पावर ऑफ मॉडल इज देन टेस्टेड विद एस्टिमेट्स एंड फोरकास्टिंग. एक तो ये कि भाई इफ द एस्टिमेट्स आर एप्रोप्रिएट, कोई भी मॉडल जो है, अगर आप क्वांटिटेटिव मॉडल डेवलप कर दें, कोई भी मॉडल आप डेवलप कर दें, compare the estimates with the theory, and if it is appropriate, if it is according, if the signs are according to the sign, if the magnitude is according to the theory, if it is matching, so it's well and good. And the second, what is the ultimate purpose of quantitative modeling? That is forecasting. If the model can forecast well, or the forecasting is approximately close to the real values, then it is supposed to be a good model. How we can conclude about a model, whether a model is a good model or otherwise, there are two things. Compare the estimates of that model with the theory. If the sign is matching with the sign, if the magnitude is matching with the magnitude, if it is according to the theory, it's well and good. Number two, if the model can forecast, for example, आपके पास 10 साल का डेटा है कि पिछले 10 साल से जो है हमारे यहाँ जो है वो रेनफॉल वो इस तरह से वो हो रही है, ये डेटा सेट है, और आप उसके बेस पे आप कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं फॉर 11th ईयर कि what will be the rainfall for the next year, say 2024. तो उसको बुनियाद बना के उस 10 साल का डेटा सेट उठा के आप उसके बेस पे वो कर रहे हैं, और जब रियली वो 2024 वो आ जाए, रेनफॉल का डेटा हम लें, एक तो हमने फोरकास्टिंग की हुई होगी 10 साल के डेटा के ऊपर या 15 साल के डेटा के ऊपर, और जब रियल में वो 2024 आ जाए और उस टाइम पे जितनी रेनफॉल हो जाती है, एक आपकी फोरकास्टेड वैल्यू है, एक आपके पास वो रियल वैल्यू आ जाएंगी. सो व्हेन इट कम्स टू द कंपैरिजन ऑफ इट, और आप देखें कि भाई दोनों में थोड़ा जितना, ये कभी नहीं हो सकता कि आपकी रियल वैल्यूज और आपके फोरकास्टेड वैल्यूज वो बिल्कुल एक जैसे होगी, कभी नहीं हो सकता, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व. पर्टिकुलरली इस केस के अंदर जो नेचर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका और बड़ा डोमिनेंट है उसमें. तो a good forecasting is a forecasting which lies close to the actual values. जो एक्चुअल वैल्यूज के करीब तरीन हो, जिसके अंदर एरर थोड़ी हो, वही जो है बेहतरीन आपकी फोरकास्टिंग होती है. सो हाउ डू वी calculate the economic the health
or the scientific health of a model, it is based on these two things. Estimates, we match these estimates with these things are supposed to have gone over the heads of the literate people. Yes, probably for them the qualitative techniques might be more relevant. Like unfortunately, the session is about the quantitative techniques. I do understand कि इसमें जो है it's not equally beneficial for all the people across the different discipline, but I'm trying my level best कि जितने simple और सादा अल्फाज में इस content को आप लोगों के सामने रख सकूं, तो that is my understanding. जी, तो ओवरऑल एक समरी की, तो चलो मैं एक समरी कर लेता हूँ इसको दोबारा आप लोगों के लिए, एंड फिर उसके बाद भी मैं टेक अ ब्रेक. ठीक है, हम वो ले सकते हैं उसके बाद. अच्छा जी, हाउ डू वी मॉडल बिहेवियर्स इन सोशल साइंसेस, कैसे वो कर लेते हैं. अब उसमें whenever we want to develop a model, it must be based on some underlying theory. The theory help us identifying the relevant dimensions and indicators. उससे हमें पता चल जाता है. फिर उसके बाद जो है, जब एम्पेरिकली मॉडल को डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद उसके साइंस और मैग्नीट्यूड्स हमारे पास आ जाती हैं. उस मैग्नीट्यूड्स और साइंस को हम थ्योरी जो प्रपोज करती होती है, साइंस और मैग्नीट्यूड्स, उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं. फिर उसके बाद ओवरऑल मॉडल की जो हेल्थ है वो किस तरह से हम असिस्ट करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन दीज टू स्टैंडर्ड्स. वन वी कॉल इज टू द एस्टिमेट्स, and the other we call is the forecasting power of the model. अगर आपके estimates, if it matches with the theory, its signs and magnitudes, it's okay. And forecasting जो है वो, अगर इस मॉडल की जो forecasting है, if it values lying close to the real values, तो फिर उससे ये होगा, फिर उससे ये होगा कि ये मॉडल इतना अच्छा होगा. जितनी रियल में आपके पास इंफॉर्मेशन है और जितनी आपके पास इस मॉडल की फोरकास्टिंग है, जितनी क्लोज ये एक दूसरे के साथ लाई होगा, इतना ही ये मॉडल अच्छा होगा. फॉर एग्जांपल, आप में से कोई बंदा एज ए मैनेजर के तौर पे कहीं पे काम कर रहा है, आपको बॉस आपको कह दे कि ये ले 20 साल का डेटा, मेरे सेल का डेटा ये ले, हर साल हमारी जो सेल है वो इतनी रही है. अब मुझे बताएं कि 21वें साल हमारी जो सेल है वो क्या होगी. यू यूज दिस हिस्टोरिकल डेटा, यू डेवलप अ मॉडल अकॉर्डिंगली, और आप इससे जो है फोरकास्टिंग कर लेते हैं. 21 साल का जो रियल सेल का डेटा आ जाता है वो भी आपके पास है, जो आपने एस्टिमेट किया हुआ होता है वो भी आपके पास है. इफ देयर इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जर्वेशन, if smaller the difference between these two observation, जो रियल में कितनी सेल हुई, जो आपकी फोरकास्टेड सेल थी वो कितनी हुई, जितना ये डिफरेंस थोड़ा होगा, स्मॉलर होगा, इतना आपका मॉडल अच्छा कंसिडर होगा. So this is how we can assess an economic model based on these two standards. How accurately the estimates, empirical estimates representing is matching with the theory, underlying theory, and how strong the forecasting of the model is. अगर ये दोनों एक जैसे वो हैं, forecasting भी अच्छी है, estimates भी अच्छी हैं, तो फिर इन दोनों के बुनियाद के ऊपर हम कह सकते हैं कि whether our model is a good model or otherwise. ठीक है, ब्रेक लें फिर जी. कितने टाइम के लिए है? हाँ? अच्छा, it's a break of 30 minutes, so just get relaxed and we will come together once again. We'll join each other on around 11:30. So चाय पिए, गप्पे शप्पे मारे, कोई काम करने का हुआ वो करें, कोई नहीं इशू. वी हम दोबारा से इंशाल्लाह 30 मिनट्स बाद जो है एक दूसरे के साथ मिलेंगे यहाँ पे. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड फॉर योर कंट्रीब्यूशन एज वेल. आप लोगों ने माशाल्लाह, कुछ लोगों ने जबरदस्त कंट्रीब्यूट किया उसमें हमारे इस कंटेंट में. सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर लिसनिंग एंड योर कंट्रीब्यूशन टू दिस सेशन. सही नहीं ना, बंदूक वाड़ी का ना, हाँ, ऐसे भाई, हेलो भाई.
Assalamu alaikum and welcome back. जी, am I audible to everyone? आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ, okay. Thank you. Okay. The full screen बता देना था. Screen में ऐसे full कीजिए. More options. Yeah. चलिए comments में दिखा दिखो. Great. जी जी. Thank you. Welcome back everyone. Welcome back. जी, इसी मैं दोबारा से जस्ट टू रिकॉल योर मेमोरीज, मैं क्विक समरी आप लोगों को दे देता हूँ कि लास्ट जो स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया. हमने कहा कि हाउ डू वी मॉडल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. तो उसके लिए हमने कहा कि whenever we want to model a quantitative relationship, it must be backed by some particular theory. From the theory, we'll be getting information okay, what is relevant and what is not, and to focus on the most important dimension, our most important aspect of a particular phenomena which is going to be investigated. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं when it comes to the empirical models, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, we compare the signs and magnitude from the empirical models. और अगर थ्योरी की कहीं पे साइन या मैग्नीट्यूड के बारे में कोई हमारे पास उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद है, सो वी कंपेयर इट विद द थ्योरी. इफ इट मैचेस, द साइन मैचेस विद द थ्योरी, द मैग्नीट्यूड मैचेस विद द थ्योरी, इट्स वेल एंड गुड. फिर फाइनली हम किस तरह से किसी मॉडल के बारे में कंक्लूड कर देते हैं अबाउट इट्स साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल हेल्प. तो हम दो चीजों को बुनियाद बनाते हैं. द वन, वी कंसिडर द एस्टिमेट्स. If the estimates are appropriate, its sign is okay, its magnitude is okay, and it matches with the theoretical uh, explanations of it, so it's fine. और दूसरा जो है वो forecasting के बारे में हम वो देखते हैं. If the model is good in terms of forecasting, so the model is supposed to be a good model. ठीक है, इस हवाले से हम उसको वो करवा देते हैं. तो जब भी हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बेस पे कोई मॉडल डेवलप कर लेते हैं तो इन चीजों का हम लिहाज रखते हैं. We take into account a particular theory on the basis of which we can model the variables of interest. Then we take into account, based on the theory, we consider the most important aspects and important dimensions of, and based on that we define the variables, we select the variables based on that. और फिर उसके बाद जो है वो मॉडल हम रन कर लेते हैं. फिर मॉडल रन करने के बाद उसकी साइंस और मैग्नीट्यूड्स को जो थ्योरी की हेल्प से जो हमें हेल्प देती है उसके साथ उसको मैच करा देते हैं. अगर हमारे पास if it is exactly models we construct our own model. जी, आप दोनों तरह से वो कर सकते हैं. particularly previous studies, whatever we are doing, we do find some previous studies on the similar topic. So you can take the benefit of this previous topics conducted on the similar issues. तो उसकी भी आप लोग help लग सकते हैं. और फिर अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए आप उसमें से कोई एक आध वेरिएबल ऐड कर लेते हैं या उसको एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको फ्रेम कर लेते हैं. तो ये आप लोगों की उसमें से कंट्रीब्यूशन आ जाती है. ठीक हो गया? So this is what we discussed before the break. Coming back to the same thing, quantitative models. अच्छा जी, जितने भी हमारे पास मॉडल्स होते हैं सोशल साइंसेज में, इवन साइंस के अंदर जो मॉडल्स हैं, क्वांटिटेटिव मॉडल्स हैं, इट्स बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions.
कोई भी मॉडल जो है, अगर आप देखें साइकोलॉजी में, सोशल साइंसेस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, स्टेटिस्टिक्स में, ये जो मॉडल्स आपके पास होते हैं, इट्स बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। क्वांटिटेटिव डेटा के बेस पे जितनी भी आप मॉडलिंग करते हैं, तो ये मॉडल्स सर्टेन assumptions के ऊपर बेस कर रहा होता है। These assumptions are not we cannot say it's the weaknesses of these the models. लेकिन we must take into account these assumptions while modeling the models are the variables of interest accordingly. तो वो जरूर जो है उसको कंसिडर करना होता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू गॉट टू वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट, जैसे दोबारा से उसी एग्जांपल के ऊपर अब जाएं कि हाउस होल्ड लेवल के ऊपर जो अर्निंग है और हाउस होल्ड लेवल के ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं, उसके ऊपर अगर हम जाएं, तो this model is based on certain assumptions। यानी ये जिस टेक्निक के थ्रू, जिस रेग्रेशन के थ्रू हम इन दोनों वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ कॉज और इफेक्ट की शक्ल में उसको मॉडल कर रहे हैं, सो इट्स बेस्ड ऑन सर्टेन assumption। दिस मेथोडोलॉजी, दिस रिग्रेशन, दिस OLS प्रोसेस, जो अंडरलाइंग प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जो है उस सर्टेन assumptions के ऊपर वो काम कर रहा होता है। तो वी मस्ट नाउ अबाउट दीज assumptions। अगर आप लोगों को ना पता हो और आप वैसे ही दो वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट उसको लिया और मॉडल किया और रन किया और कंक्लूड कर लिया कि भाई हाँ, इनके दरमियान स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, सो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट वी माइट बी रॉन्ग इन अवर कंक्लूजन। नाउ नंबर टू, इट्स बेस्ड ऑन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। क्वांटिटेटिव जो मॉडल्स हैं, किसी भी दो वेरिएबल्स या मोर वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम मॉडल कर रहे हैं, सो इट मस्ट रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ऐसे ना हो कि रियल वर्ल्ड में चीजें डिफरेंटली हो रही हो और आप जिस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर्स को डिफरेंट सिचुएशंस को मॉडल कर रहे हैं वो डिफरेंट हो। नहीं, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सो फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स व्हिच इज द कॉज एंड इफेक्ट। अब जैसे मैंने कहा, किसी भी चीज को डिटरमिन करने के लिए बहुत सारे उसके मुहर्रिकात हो सकते हैं, उसके डिफरेंट काजेस हो सकती हैं, but what we need to do, that we need to identify the most important dimensions, the most relevant important dimensions and indicators and variables, और उसी को हम अपने मॉडल के अंदर जो है वो ले लें। For example, if we are trying to find the economic reasons that why variation across the families, across the household in terms of expenditure prevails, so उसके अंदर हमें economic indicators को लेना होगा, उनकी इनकम, उनके एसेट्स, उनके फाइनेंशियल एसेट, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह जो चीजें हैं उनको देखना होगा, और ये सारी चीजें बड़ी रिलेवेंट होगी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो इफ वी ट्राई टू फाइंड वेरिएशन अक्रॉस द एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली और हाउसहोल्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, तो उसमें से वो सारे इकोनॉमिक और इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हमें वो लेने वो होंगे। इसी तरह से अगर हम इसके सोशल कॉन्टेक्स्ट में इस वेरिएशन को लिंक करना चाहें, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो सब आपके मॉडल के अंदर होने चाहिए। ओके, सो मैं दोबारा से आप लोगों के लिए उसको रिवाइड कर रहा हूँ। क्वांटिटेटिव मॉडल्स के अंदर, whenever you want to develop a quantitative model, your model is based on certain assumptions, it is based on the real world situation, and it focuses on the most important determinants in that particular context, which is called the cause and effect. Okay, अब हम दोबारा से उसी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जो एग्जाम्पल हमने शुरू से शुरू किया, ताकि एक तो ये सब के लिए इजी है। इनकम वाली जो है, किसी भी लेवल पे, किसी भी जॉब, किसी भी बैकग्राउंड से आप हैं, यू नो इनकम, यू नो कंजम्पशन, यू नो एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो वो इसकी अंडरस्टैंडिंग है। सो फॉर मी इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल एंड इट कैन बी यूज अक्रॉस द वेरियस डिसिप्लिन्स, इसलिए मैं उसको बोले रहा हूँ। तो इनकम कंजम्पशन मॉडल में हम क्या करते हैं कि वहाँ आप लोगों की जो कंजम्पशन है, डिफरेंट या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं, वो मोस्टली अगर हम देखें कौन सी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्ली इनकम कम्स फर्स्ट इनटू द माइंड, कि शायद इनकम ही है जो कंजम्पशन के अंदर वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, कंजम्पशन इज द इफेक्ट and income is the cause. If we believe that there are certain other important variables, say demographic variables,
और जो है gender related indicators. For example, we believe that if a household is headed by a female, then the consumption pattern should be different. Or if a household is headed by a male, then the consumption pattern should be different. If we have a very established explanation for it, then we must include this gender of the household as well. इसी तरह से अगर हम ये समझते हैं, चलिए मैं ट्राई कर लेता हूँ कि माइक के साथ जो है वो स्टक रहूं, तो मेरे ख्याल में अब कुछ इम्प्रूव हो गया है, मेरी जो वॉइस है कुछ इम्प्रूव हो गया है, क्लियर है. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सलीम, थैंक यू. ओके, तो नाउ हमें समझना होगा in which context we are going to model this relationship. हमें सिर्फ इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स इसके चाहिए, हमें सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स इसके चाहिए, हमें डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी. सो मोस्टली वी टेक इनटू अकाउंट द मोस्ट रिलेवेंट aspects related to any particular situation or any particular phenomenon, and then we try to model that behavior, that particular situation within the context of that certain determinants. ठीक हो गया? अच्छा जी. सिमिलरली हमारे पास दूसरी भी इस तरह के इंस्टेंसेस हो सकती हैं, जैसे एक और कॉमन मिसाल इसकी ये है कि whenever you want to purchase, when you want to make purchase decisions, so what are the important things that you take into account? आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं कि मुझे बताएं जरा. When it comes to the purchases of various goods and services, what kinds of information you take into account? Price, of course, it's one of the important determinant. The quality, yes, of course, it's another important determinant. Okay, quality, price and quality together, durability, budget, demand, availability, price. Amazing, 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 amazing. Good job, good job. Yes, अगर इसमें से आप लोगों ने जितनी भी यहाँ पे वो कर ली है ना, मेरे साथ जो शेयर कर ली हैं factors, so probably the price is one of the important determinant. ठीक है? Your purchase decision is based on the price of that particular commodity you are going to purchase it. तो यहाँ पे हमें पता चला कि भाई price is one of the important determinant of demand. What else we can consider? For example, quality of that product, whether a particular product is it has a good quality or otherwise. The quality, you mostly assess it with the price of that commodity of it. जितने प्राइस पे आपने उसको खरीदा, क्या उस प्राइस पे ये क्वालिटी सही है या नहीं है, आप इसको भी जो है कंसिडर करते होते हैं. What else do we consider? Taste. जी, taste of the consumer, whether you have a taste for that commodity or otherwise. Income, वो खैर है, वो प्राइस में वो चीजें आ जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उसमें. ओके, प्राइस ऑफ द अल्टरनेट कमोडिटीज. हाँ, जिस प्राइस पे आप कोई पर्टिकुलर कमोडिटी खरीद रहे हैं, क्या उसी प्राइस पे उस जैसी चीजों की क्वांटिटी कितनी मिल रही है, और वो किस किस्म की चीजें जो है आपको उसकी सब्स्टिट्यूट्स की शक्ल में वो अवेलेबल हैं. यस, ऑफ कोर्स. सो फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस काइंड ऑफ थिंग्स. Yes, of course, utility is one of the important things. What is the utility of that commodity for you? And that will determine the price of that commodity in your mind. Yes, of course. Thank you very much, everyone. Acha ji. So basically, you identified the factors which might be relevant while estimating a demand function for a particular individual or for a particular household. तो अभी आप लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से आपके ज़हन में आई मुख्तलिफ चीज़ें कि भाई by taking into account the real world situation, by taking into account your previous studies, आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें आई कि हाँ, ये वाली जो चीज़ें हैं, these are relevant, and that is how we develop a mathematical जो statistical model based on these the relevancy of the variables. So when we take into account the relevant variables, whether it is supported by a particular underlying theory or whether it is supported by the observations of the
the observations of the researchers are whether it is used in the previous studies or empirical literature. So वो तमाम जो variables जो relevant हमें दिखते हैं मुख्तलिफ sources से जो हमें पता चलता है, we do include all these variables in the models. Okay जी. आखिर पे हम क्या करते हैं? We do evaluate these models. ये बिल्कुल जो previous slide है उसी की continuation है और उसकी थोड़ी सी elaboration है. जी, ओके जी. जी, assumptions हाँ होती है हर एक मॉडल की. फॉर एग्जांपल इसमें से जो इनकम कंजम्पशन मॉडल है उसके अपने assumptions हैं, जो डिमांड एस्टिमेशन मॉडल है उसके अपने assumptions हैं. Agar if you take into account one variable and you believe the rest of the variables are also important, but at this point in time you are just interested to know the impact of a single variable on the dependent variable. So we assume that keeping all the other factor constant, which is not that realistic assumption, but we do mostly we do these kinds of things in while conducting quantitative studies and developing quantitative models. अच्छा जी. तो हम क्या करते हैं? हम while developing quantitative models, it must be based on certain assumption. It's based on the real world situation. It should match with the real world situation. अगर आप कहीं पे दोनों मॉडल्स में से कोई भी एक मॉडल इस तरह से डेवलप करें कि आप लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डिफरेंट हो, यानी आप देखें कि भाई रियल वर्ल्ड में व्हेन इट कम्स टू परचेजेस डिसीजंस प्राइस तो इम्पोर्टेंट नहीं है, या इनकम लोगों की तो इम्पोर्टेंट नहीं है, या क्वालिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए. So it must be based on the real world situation. When it comes to development of the quantitative model, it takes into account all those factors, all those components, all those variables, which has a real world sense. When it comes to the real world observations, तो कम से कम real world observation उसके against ना हो. और फिर theoretical importance के base पे हम उसके important variables या determinants identify करके उस model के अंदर fit कर लेते हैं. तो लास्टली हम जो है किस मॉडल को अच्छा मॉडल कहेंगे, या कौन सा मॉडल जो है वो ऐसे होगा जिसको हम अच्छा मॉडल कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव मॉडल कह सकते हैं. सो आई नीड योर इनपुट इन दिस रिगार्ड. व्हिच मॉडल इज सपोज्ड टू बी अ गुड quantitative model, or in other words, how do we know about the statistical health of a model, whether the model is a good model or it is otherwise? G, test. We use different kinds of tests. We do consider the estimates. We do consider the errors associated with the model. Yes, of course. What else? Forecasting and estimates. Yes, of course. These are the two important dimensions. Any model yes, accuracy. So how, if the model is good in terms of its accuracy while making predictions based on it, forecasting on it, so the model is supposed to be a good model. Similarly, if the estimates match with the theory, or if, for example, underlying theory, for example, in demand estimation model, if we do consider this particular example, so it shows that जो है price and quantity demanded should be inversely related, because it's the general behavior of the people whenever the price for a given commodity increases. So as a result, its quantity demand decreases. It's very common all across the world. On average, जब भी चीजों की कीमती बढ़ती हैं, तो क्या होता है, लोग उन चीजों की मकदार को पहले के मुकाबले में वो घटा देते हैं. It's a very common observation. ये यहाँ पे भी है, यूएस में भी है, दूसरी कंट्रीज में भी है. तो इससे ये होगा कि हमारे पास जो है हमें पता चलेगा कि भाई थ्योरी से हमें हेल्प हुई है, थ्योरी से हमें हेल्प हुई है कि भाई इन दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है, वो नेगेटिव है. तो यहाँ पे भी आप देखें कि आपके एस्टिमेट्स की जो साइन है वो नेगेटिव है. अगर वो नेगेटिव है तो इट मैचेस विद द थ्योरी. अगर आप इसके बेस पे प्रेडिक्शन करें और वो प्रेडिक्शन आगे जाके जो है वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन के साथ ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा मैच कर रही है, सो द मॉडल इज सपोज्ड टू बी अ गुड मॉडल. जी,
आप में से किसी एक ने पूछा कि अगर हम इसको प्रैक्टिकली या वो कर दें तो ज्यादा होगा बजाय इसके एक्सप्लेनेशन के। इसके बाद वाली जो स्लाइड्स हैं हम एक सिनेरियो को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें पूरी एक रिसर्च प्रोसेस के थ्रू इससे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च हाइपोथेसिस और ये सारा कुछ अप्रोप्रिएट जो टेस्ट हैं वो क्या होंगे और कैसे हम इसको आखिर तक लेके जा सकते हैं, वो सारा इसके अंदर इंक्लूड है। पहले हम थोड़े से इसको समझने की कोशिश करें, फिर वो प्रैक्टिकल उस वाली जो पोर्शन है उसमें जाएंगे, इसके बाद इंशाल्लाह वो वही है। तो while developing quantitative models are based on certain assumption. Now to make assumption about model, it's not a bad thing as long as it is based on the real world situations. मॉडल्स इस तरह के हो कि जहां पे जो वेरिएबल्स और जो डायमेंशंस आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो रियल वर्ल्ड के अंदर भी प्रिवेल कर रही हो उसी तरह से। ऐसे ना हो कि वो एकेडमिक डिस्कशन में तो ठीक है, लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड में देखें तो लोग अपने परचेजेस के डिसीजन बड़ी डिफरेंटली वो करते हैं, और अगर आप अपनी जो एक्सपेंडिचर के डिसीजंस जो हैं वो बड़ी डिफरेंटली वो कर लेते हैं। नहीं, इट शुड मैच विद द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। एंड व्हाट वी डू, वी फोकस, बिकॉज जैसे मैंने कहा एक ही चीज को बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाई वेरिएशन अक्रॉस द हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर्स प्रिवेल्स, उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। इसके डेमोग्राफिक एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, उसके जो है वो आपके इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, उसके सोशल एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। बहुत लोग ऐसे हमने देखे हुए होते हैं कि जब उन्होंने काफी टाइम वो गुर्बत के अंदर गुजारा हुआ होता है, तो दो के एट दिस पॉइंट इन टाइम, एट करंट पॉइंट इन टाइम, दे आर अर्निंग ए वेरी हैंडसम अर्निंग, but still their consumption pattern is very much different as compared to the similar people, the people who are earning almost the same amount. तो अब वहां पे जो साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो भी चली जाती हैं। सम पीपल आर वेरी मच कॉन्शियस, दे अर्न वेरी मच at current time, but they are more futuristic, that is why they save more and they consume less. तो वो अगेन जो है हमारे पास एक साइकोलॉजिकल जो है वो फैक्टर आ जाती है कि इट्स क्वाइट पॉसिबल दो लोग जो एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, जिनके पास एक जितना विरसा है, जिनके पास एक जितनी एसेट्स हैं, लेकिन एक फ्यूचर के बारे में ज्यादा कॉन्शियस है, दूसरा थोड़ा कॉन्शियस है, तो जो फ्यूचर कॉन्शियस बंदा है वो सेव ज्यादा करता है और स्पेंड थोड़ा करता है। जो फ्यूचर कॉन्शियस नहीं है तो वो क्या करते हैं, अभी करंट जो इसकी सिचुएशन है वो अपनी करंट लिविंग के ऊपर स्पेंडिंग ज्यादा कर लेते हैं, और फ्यूचर के बारे में थोड़ा कॉन्शियस है कि जब कोई अल्लाह ना करे कोई फाइनेंशियल इमरजेंसीज आएंगी तो फिर देखा जाएगा उस टाइम पे। सो देयर माइट बी, वही मैं कह रहा हूँ कि इसको लिंक करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। Nobody can say कि which one is better. That all depends. People have their own circumstances. तो हम नहीं कह सकते कि कौन सा अच्छा है, कौन सी जो है वो नहीं है। It depends. ठीक है, एक अपने हिसाब से अच्छा अपने इंटरेस्ट में बेस्ट डिसीजन ले रहा है, दूसरा अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट बेस्ट इंटरेस्ट में डिसीजन ले रहा है। So they behave differently, though they are experiencing the same socioeconomic condition, but their experiences is very much different because one is more futuristic and the other is not. नायाब सरफराज, आई एम तो सॉरी, मैं इंग्लिश लिटरेचर के बैकग्राउंड का मुझे नहीं अंदाजा ज्यादा है, दैट्स व्हाई I'll not be able to give you at this point in time a proper explanation of it. Okay, so this is how we develop the quantitative models and how we assess it. Okay, if you're okay with it, so we may proceed. Okay, thank you very much. Okay, now let's discuss a scenario. I'm just sharing with you, it's a hypothetically created scenario, and we will be having a scenario, and based on this scenario, we will develop our problem statement.
From the problem statement, we'll develop the research questions, our research hypothesis, and research objectives. And from that, we will try to identify the relevant techniques, quantitative techniques. We'll try to estimate the parameters of the model, and we'll then try to make an interpretation of it and to conclude about our hypothesis, that whether we concluded, what is our conclusion about these hypotheses. तो मेरे ख्याल में अब यहाँ पे थोड़ी सी एप्लीकेशन का टाइम आ गया. हमने थोड़ा बहुत पढ़ा कि what are the quantitative techniques, starting from the research philosophies of it, because quantitative techniques, it's based on the research, positivist research philosophy. And then this is the research approaches is the deductive, because mostly we test the established theories we do test the theories that whether it works in a particular context or otherwise. And then we derive our research approaches from it. And the research approaches, then the research design, and then the research design takes into account the sample, the population, the nature of the variables, the relationship of these variables, the quantitative models, and then the estimation techniques, all these things together. तो ये सारी चूंकि एक बड़ी कोरिलेटेड होती है एक दूसरे के साथ. अब हम ट्राई कर रहे हैं from this scenario onward, हम ट्राई करेंगे कि for example, if we got a situation, how from that situation we can develop a problem statement. From the problem statement, how we can derive the questions and research hypothesis, and then how to decide about the empirical methods, which kind of method should be used in this particular context, and then the estimation processes, and then the results, and then the validity of these results within the context of quantitative techniques. So all these things will go together. Okay. Okay, let's have a look on these. Look on this scenario. For example, this is a situation. This is a scenario hypothetically created. It's a very simple scenario, and I hope that it's very easy to understand for all the different participants across the different disciplines. It's very easy. For example, गवर्नमेंट को पता चला एक कम्युनिटी है जहां पे where the people are living below the poverty line, where access to financial opportunities is low. सपोज करें एक ऐसी, अगर हम देखें अपने मुल्क के अंदर, अगर हम देखें मेरे ख्याल में रजीम खान, we are recording it, and I will request the management to share the link of this lecture with all of you. I do realize कि कहीं पे बिजली का भी मसला होगा, कहीं पे और कहीं पे जो है आवाज वगैरह उसका मसला हुआ होगा, सिग्नल्स वगैरह. तो ये हाँ, मैंने सबको कर लिया है एट द वेरी बिगिनिंग, कि वो जो है वो कर ले इसको, खुद से भी वो रिकॉर्ड कर सकते हैं. मैंने सबको अलाउ भी कर लिया था. ओके, चले जी. एक सिनेरियो है, इसमें हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जहां पे लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक इंटरवेंशन करना चाह रही है. एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर लोगों की जो एक्सेस है towards the opportunities, access to health, access to food, and access to shelter, which is supposed to be the fundamental economic rights, उन तक उनकी एक्सेस नहीं है. गवर्नमेंट ये चाह रही है कि लोगों को कर्ज हसना के तौर पे कुछ माली इमदाद किया जाए ताकि लोग अपने लिए इनकम अपॉर्चुनिटीज को एनहांस कर दें और उनके पास अर्निंग ज्यादा आए और वो एक्सेस टू फूड और शेल्टर और हेल्थ जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको इम्प्रूव कर दें. This is the scenario. The government has initiated, suppose, an income support program in the form of Qarz Hasna for self-employment and income-generating activities to enhance the income of the poor and financially marginal communities member. मैं दोबारा से आप लोग के लिए इसको आसान बना रहा हूँ. एक जगह ऐसी है जहाँ पे कम्युनिटी रह रही है, उस कम्युनिटी में लोगों की जो लिविंग स्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो अकॉर्डिंग टू द बेंचमार्क नहीं है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट चाह रही है कि लोगों को कर्ज हसना की शक्ल में पैसे दे
ताकि उन पैसों से वो अपने लिए एडिशनल इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दें और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दें. यस, ऑफ कोर्स फजल मानशाह, ये दिस इज exactly pointing out to the initiative taken by Dr. Mohammed Yunus. Yes, but that was a bit different because that was an interest-based intervention. That is what we call is the microcredit intervention. ठीक है. अच्छा जी, अब यहाँ पे ये है हमारे पास ऑप्शन है, the poor communities members were randomly selected. उसके अंदर 1000 लोग हैं, या हमने गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि 1000 ऐसे लोग जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी है उसको सेलेक्ट कर दें और फिर उसके जो डेमोग्राफिक और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन इंडिविजुअल्स की वो नोट कर लें. मैं फिर से आप लोगों के लिए उसको आसान बना रहा हूँ. एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे लोग गुर्बत के शिकार हैं, गवर्नमेंट चाह रही है कि उसको कर्ज हसना की शक्ल में सपोर्ट करे, इनको पैसे दे. ऐसे में उनको इन्होंने ऐसे 1000 लोगों को सेलेक्ट करना है, 1000 जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस एक जैसी हो, जिनके पास दूसरे वसाइल ना हो और जिनके पास दूसरे सोर्सेज ना हो, और वो उनको गवर्नमेंट जो है वो ये कर्ज हसना की शक्ल में मदद देने के लिए जो है वो उसको तैयार कर रही है. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हुआ. अब इन्होंने ऐसे किया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि तमाम जो 1000 लोग सेलेक्ट हुए उन सबको ये लोन नहीं दिया. उसमें से 2 ग्रुप्स बनाए उन्होंने. गवर्नमेंट ने जो 1000 इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किया जो उनके ख्याल में गरीब थे, ये पॉलिटिकल डिस्कशन है कि सेलेक्ट हो जाते हैं या जो दूसरे हैं उससे, इट्स माइट बी अ डिफरेंट डिस्कशन. अच्छा जी, अब गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि भाई ये जो 1000 लोग इन्होंने इनिशियली सेलेक्ट किए, इट वी कैन यूज एनी yardstick on the basis of which we can classify that who is poor and who is not. इस के लिए हम बहुत सारे जो है वो टेक्निक्स हैं वो यूज कर सकते हैं. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट चाह रही है कि इन 1000 इंडिविजुअल्स को की 2 ग्रुप्स बना दें. एक ग्रुप वो हो जिसको ये पैसे मिले, एक ग्रुप वो हो जिनको ये पैसे ना मिले. यानी ये दोनों ग्रुप जो है कंपेरेबल है एक दूसरे के साथ, बिकॉज द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ बोथ ऑफ द ग्रुप्स इज द सेम. बट लेकिन एक ग्रुप को पैसे मिले, वो गवर्नमेंट चाह रही है कि इस इंटरवेंशन के थ्रू कितने लोगों को फायदा होता है या ये इंटरवेंशन कितना इफेक्टिव है. सो फॉर दैट वेरी पर्पस दे क्लासिफाई ऑल द 1000 सेलेक्टेड पुअर पीपल इनटू 2 ग्रुप्स. द वन वी कॉल, जिसमें से ये लोग सेलेक्ट हुए और जिनको ये पैसे मिलेंगे उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, बिकॉज आवर रिसर्च मेथड इज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. और जो बाकी के 517 लोग रह रहे हैं उसको हम लोन नहीं दे रहे, वो कर्ज हसना नहीं मिल रहा, जिसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं. आप लोगों ने सुना होगा इसमें, ये इट्स वेरी पॉपुलर इन स्टैटिस्टिक्स और ये जो सोशल साइंसेस रिसर्च, के किसी भी इंटरवेंशन को असेस करने के लिए जो ये क्विज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस मेथड के अंदर हम करते क्या है, पहले हम अपने जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे द पुअर पीपल, यहाँ पे द पुअर पीपल that is our variable of interest and that is our group of interest. So we are interested in all those individuals who are living below the poverty line. एक बात. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये इस फिल्टर के ऊपर हमने आइडेंटिफाई किए 1000 people. Now next we want to give loan to some of them and do not extend loan to other, to the rest of the people. क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जौन से लोगों को हम लोन दे एज ए कर्ज हसना, वो हम चाह रहे हैं कि कितना डिफरेंस आया उनके अर्निंग में, और जिनको नहीं मिला वो कितना डिफरेंस उसके अर्निंग में आया in a specific time period, say 1 year or 6 months or 1.5 years. So we want to know the intervention of the effectiveness of this intervention. Yes, of course, this control group and experimental group of kinds of things. जी. Okay. After 1 year, the respondents were again approached.
अब क्या हुआ, हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने कम्युनिटी आइडेंटिफाई की जिसमें से 1000 लोग इन्होंने आइडेंटिफाई किए। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक डेफिनेशन ली कि कोई भी इंडिविजुअल हु इज नॉट एबल टू अर्न $2 पर डे इज सपोज टू बी पुअर। इस डेफिनेशन के नतीजे में उनको 1000 लोग मिले सपोज। उन 1000 को इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया, ठीक है। 487 को वो पैसे मिले, उन्होंने कर्ज हसना की अमाउंट दी, और बाकी जो 517 लोग रह रहे थे उनको वो पैसे वो नहीं दी। ये इसी वजह से किया गया कि ताकि इस इंटरवेंशन को बाद में असेस किया जाए कि हाउ इफेक्टिव दिस इंटरवेंशन इज, वेदर हेल्पिंग द पुअर पीपल इन टर्म्स ऑफ कर्ज हसना to increase the self-employment and income generating opportunities among them is effective or otherwise. This is what we are interested to know. अगर ये ऐसे हैं तो फिर ये इस तरह की इंटरवेंशन हम दूसरे एरियाज में भी कर सकते हैं। अगर ये इफेक्टिव नहीं है, अगर ये इफेक्टिव नहीं है, मेरे ख्याल में इट्स नॉट अबाउट कि which one is easy and which one is not. Let's focus on this. मेरे ख्याल में if you just focus on these things, so it's not that simple. मैं repeatedly जो है उन चीजों को वो करा रहा हूँ आप लोगों के लिए just to make it easy for all of you. But for obvious reason, one lecture is not sufficient to make it understand what is quantitative research and what is not. That is why I'm trying my best कि एक lecture के अंदर जितना possible है, I'm just giving you a flavor of it. कोई भी नहीं कह सकता कि आप लोग अलामा हो जाएंगे, या मैं दावा कर रहा हूँ कि आप लोग अलामा होंगे इनके बाद क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की। Just giving you a flavor of it कि क्या होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर, and this is what I'm trying my best. ठीक है। बाकी for obvious reason it's not, the time is not that sufficient. साथ में जो है लैब वर्क नहीं है कि जहाँ पे आप लोग देख सके और आप लोग खुद से उसको कर सके, तो आप ज्यादा फायदा होता है। हमने प्रीवियसली यहाँ पे जब अब फिजिकल वो होता था उस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट भी की थी साथ में दूसरे एक लैब सेशन की शक्ल में, तो काफी पॉपुलर रहा था। क्योंकि जब आप इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम, सो आप समझते हैं कि भाई ये बड़ी मुश्किल सी चीजें हैं, particularly the people from the qualitative background. लेकिन जब आप ग्रुप के साथ बैठ के फिर उसको सिस्टम के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर इसको करने लग जाएं, so then you feel the test of it. तो इंशाल्लाह आई होप किसी दिन हम बैठेंगे, ये समझेंगे, और अगर हम भी मौका मिला इसको कहीं पे प्रैक्टिकल करने का मौका मिला, या एक दूसरे के साथ आप लोग हेल्प करने जो क्वांटिटेटिव बैकग्राउंड से है, सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी बेहतर हो जाएगी। फुल डिश के लिए जो है यू नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट। ओके जी, सो कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक। अच्छा जी, सो एक साल के बाद जो है द गवर्नमेंट वो दोबारा से उसको असेस कर रही है। वो लोग जिनको पैसे मिले थे कर्ज हसना की शक्ल में, और वो लोग जिसको पैसे नहीं मिले थे कर्ज हसना की शक्ल में, दोबारा से उनकी इंफॉर्मेशन वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट इट, एंड दे वर आस्क देयर करंट इनकम। जिस टाइम पे इंटरवेंशन हो रहा था उस टाइम पे उसकी अर्निंग का, उनके सेविंग का, उनके कंजम्पशन का, उनके एक्सपेंसेस का वो डेटा लिया गया। जिस एक साल के बाद दोबारा से फिर गए और दोबारा से उन्हीं वेरिएबल्स के बारे में जो है वो डेटा कलेक्ट किया। कंट्रोल ग्रुप से भी वो जिनको पैसे नहीं मिले थे, वो गरीब तो थे लेकिन पैसे नहीं मिले थे, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से भी वो ग्रुप जो गरीब थे और साथ में पैसे गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट मिली थी। तो इसलिए जो है वो हम अब चाह रहे हैं कि हम देखें कि गवर्नमेंट के इस इंटरवेंशन की वजह से कितना फर्क पड़ा है लोगों के अर्निंग्स पे, लोगों के सेविंग्स पे, लोगों के लिविंग स्टाइल पे, जो है वो कितना फर्क पड़ा है। और अगर वो साइजेबल है, वो ट्रांसफॉर्मेटिव है, तो फिर ये पॉलिसी इफेक्टिव है, और इसी पॉलिसी को लेके हम दूसरी जगह पे इसको सिमिलर तरीके से रिपीट कर सकते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस काइंड ऑफ इंटरवेंशन। ओके, now the government is interested to evaluate the impact of these programs on the poor and financially marginalized communities. Now you got the scenario कि situation क्या है। एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे ऑन एवरेज लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड कमजोर है, गवर्नमेंट ने उसकी असेसमेंट की, उसमें से 1000 लोग आइडेंटिफाई किए,
जो किसी यार्डस्टिक, किसी डेफिनेशन के नतीजे में वो गरीब थे। उनके फर्दर रेंडम प्रोसेस से दो ग्रुप्स बनाई गई। दो ग्रुप्स के अंदर एक ग्रुप को जो कर्ज हसना प्रोवाइड किया गया या माइक्रो फाइनेंसिंग की वो फैसिलिटी दी गई, और दूसरे ग्रुप को वो नहीं दी गई। पर्पस इसका ये था कि एक खास मौके टाइम के बाद से, एक साल के बाद दोबारा से जाएं, उन लोगों के इकोनॉमिक कंडीशंस की असेसमेंट करें। वो जो गरीब थे लेकिन कर्ज हसना का मौका नहीं मिला, उनकी सिचुएशन अब कैसी है पहले के मुकाबले में। और वो जो गरीब थे और जिसको कर्ज हसना का मौका मिला, उन्होंने उन पैसों का इस्तेमाल किस तरह से किया और कैसे अपने अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को इससे बेहतर किया या नहीं किया, वो दोनों की असेसमेंट वो करेंगे। और फिर उसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि whether the program is effective, whether demographic and education related information is effective, और अदरवाइज तो ताकि हम इस तरह के वो कर सकें। प्रैक्टिकलिटी के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो डायरेक्ट ट्रांसफर का जो प्रोग्राम है, ये तो कर्ज हसना का नहीं है, लेकिन ये मुफ्त का जो प्रोग्राम, पैसे जो गरीबों को मिल रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में। इंडिविजुअल लेवल पे तो शायद ये अमाउंट बहुत थोड़ी है और बहुत जो है वो नेग्लिजिबल है, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे अगर आप इसकी असेसमेंट करें तो इट्स वन ऑफ द ह्यूज प्रोग्राम इन द रीजन। इस पूरी साउथ एशिया के अंदर, हाँ जी, पूरी साउथ एशिया के अंदर अगर आप देखें, इट्स वन ऑफ द साइजेबल प्रोग्राम, डायरेक्ट ट्रांसफर प्रोग्राम in which we are engaged with the poor people। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये अरबों के हिसाब से इसके लिए हमारी लोकेशन वो होती है। तो ये हक बनता है कि हम देखें कि क्या गवर्नमेंट जिस तरीके से ये हेल्प कर रही है गरीब लोगों की, जिस मेथड से वो कर रही है, जिस तरह से कर रही है, जौन से लोगों की वो कर रही है, क्या ये तरीक़ाकार इफेक्टिव है? अगर इफेक्टिव है तो हम दूसरे वो लोग जो इससे रह रहे हैं उन तक भी ये प्रोग्राम इसी तरह से वो कराएं। अगर वो नहीं है तो हम क्यों बिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपीस क्यों जाया कर रहे हैं? हमें चाहिए कि भाई ये जो प्रोग्राम्स हैं इसको रिस्ट्रक्चर कर दें या रिवाइज कर दें या इसको मॉडिफाई कर दें, या अगर ऑल टुगेदर इट्स नॉट इफेक्टिव तो इसको खत्म करके किसी दूसरे शक्ल में ये जो पैसा है इस गरीबों के लिए लोकेट कर दें। सो वी शुड बी एबल टू ब्रिंग to uplift the living style of these people। ये वो वजह है बुनियादी तौर पे जिसकी वजह से हम इन प्रोग्राम्स की असेसमेंट चाहते हैं। जी, if it is clear up to here, so हम आगे जाके उसको आगे जाके इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। If the model of poverty elevation works, अब ये क्या है? It's basically an intervention on the basis of which the government wants to alleviate the poverty of the people, and on the basis of which the government wants to increase the income and economic conditions of the poor people. So if it is workable, or if it is doable, or if it works well, or if it is effective, so we may replicate the similar kinds of programs to other regions and to similar kinds of people in other places। ये बस purpose था। Now you know the scenario that what happened। So from this scenario we can develop a problem statement। What are the essential components of the problem statement? कैसे ये जो सिनेरियो अभी ये 2 स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया, इसी सिनेरियो की बुनियाद पे हम अब उसको एक क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं। उसी से हम आगे जाके रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे और फिर आगे जाके इसको एस्टिमेशन टेक्निक्स आइडेंटिफाई करेंगे और फिर आगे जाके जो है एस्टिमेट्स और फिर इसकी इंटरप्रिटेशंस वगैरह पूरा एक साइकिल इसका पूरा करेंगे। जी, आप लोग कुछ बता सकते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट? ये जो सिनेरियो हमने पढ़ा, हमने देखा, इससे कैसे हम प्रॉब्लम एक स्टेटमेंट डिफाइन डेवलप कर सकते हैं और इसके अंदर एटलीस्ट कौन से कंपोनेंट्स का होना जरूरी है? इफेक्टिवनेस का तो आखिर पे पता चलेगा, जब हम इसकी मॉडलिंग कर देंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे, तब जाके पता चलेगा अफशीन। So at this point in time, we are not, we don't know whether this kind of intervention is effective or otherwise। Determination data hypothesis, ठीक है। How to evaluate the financial state of people, ठीक है, ये भी है। By comparison, it access, okay, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ।
Quantitative researches के अंदर qualitative में भी ऐसे ही होगा कि whenever you want to develop, it's the same when we actually show what's the problem and how we will address. Amazing. Tapi Khan. State problem, then technique through which it will. Okay. Variance in their former and current income. Okay. Okay. ठीक है. ये भी एक component हो सकता है. Thank you very much. Okay. चले मुझे वो जरा बताने दें. Before we have a look at the problem statement, okay, to evaluate the effectiveness of the income support program, a comparative analysis will be conducted comparing. Well, sorry, okay. Alam Jan, thank you very much for a very detailed comment. Thank you. Chale, मैं आप लोगों को बता देता हूँ. While developing a problem statement, we must have certain components of it. So we need to take into account these components, and any kind of problem statement you're going to develop, whether it's related to a social phenomena, whether it's related to an economic problem or otherwise. So we must take into account these these components. One, we need to precisely define the problem at hand. What is the problem at hand? Number one. Number two, who are they suffering from this problem? कौन है, डायरेक्ट सफर कौन हो रहा है और इनडायरेक्ट सफर कौन हो रहा है. दो. Number three, what if we find a solution to the problem? For example, if we find a solution to the problem, so how it will contribute to the living standards, to at the policy level, at the literature level, वगैरह वगैरह. तो ये क्या होगा, किस तरह होगा, इसके डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या होंगे, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या होंगे. So for example, if we try to develop a problem statement from this same scenario, तो एक तो उसमें से हम कह रहे हैं कि भाई it's talking about the poverty, the people who are living below the poverty line. So it's a social problem as well as it's an economic problem. Poverty, it's undesirable, which leads to further socioeconomic problems. Everybody knows it, that poverty, it's a problem. It's an economic problem at the first stage, but it gives birth to so many different socioeconomic problems. And at this point in time, around 22% of the total population, they're living below the poverty line. It's based on our national definition of poverty. You may use any definition of poverty because poverty can be defined in terms of dollars per day approach. It can be defined in terms of calories intake. It might be defined in terms of the cost of basic needs. It might be defined in terms of living standard. It might be defined in terms of its multi-dimensions aspects of it. तो कोई भी आप एक yardstick ले, कोई भी ठीक हो गया. अच्छा जी. So जो 22% की है, approximately 22%, it's based on yes, this is what we call is the poverty line. So 22% of the total population is living below the poverty line at this point in time. Kiss best pay, it's based on our poverty definition, which is known as the cost of basic need. Okay. Agar aap 22% ko le, it's a very huge number. Yes, it may be 40%, and even it is 86%, based on the middle income countries' definition of poverty, which is around $3 in say 76 cents or 75 cents. तो इसको अगर हम लेंगे, so about काफी ये depend करता है. So it depends कि which kind of definition of poverty you are taking into account, and based on that you will be having a corresponding incidence of the poverty. चल मैं दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूँ. Poverty statement, it's poverty is undesirable. Everybody knows it because it gives birth to so many socioeconomic problems. At this point in time, suppose 22% of the total population living below the poverty line, based on our national definition of poverty. 22% of say 230 million people. It's a very huge amount in terms of numbers. Okay, so which initiations of this kind of activities, that is the provision of qarz hasna to the poor people, can reduce the numbers of it and can bring bringing in their socioeconomic conditions. This is what we see. Okay. Now, based on the problem statement, what are the factors which are the most important and which are mostly relevant? So it's basically a theoretical framework.
The people who are poor, they're facing a disadvantaged condition of their circumstances. Now, what we want to uh, develop an intervention which can ultimately bring an increase in their income. An increase in their income will increase their access to grab more financial, more health, and more education-related opportunities, which will ultimately increase their living standard. मेरी बात की समझ लग रही है आप लोगों को? कैसे मैं इसको लिंक कर रहा हूँ? वो आगे इससे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंशाल्लाह निकालेंगे। पहले हम थोड़े से इसको समझें यहाँ पे, कि इस लॉजिकल रिलेशंस को हम समझें और थ्योरेटिकल लिंक को हम समझें कि कैसे लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए हम इंडिविजुअल्स या पुअर लोगों की इनकम को टारगेट कर रहे हैं, ताकि जब उनकी इनकम इम्प्रूव हो सके, so this will further increase their access to other opportunities, like access to health opportunities, access to food opportunities, access to shelter opportunities, and access to financial opportunities. वो further improve हो जाएगी उससे। तो ये एक किस्म की एग्जांपल है, हम चेंज वो नहीं कर सकते क्योंकि एक सिनेरियो हमने ली, ऐसी सिनेरियो जो मतलब है कि हमारे पास पुअर कम्युनिटी है, ये अंडरस्टैंडेबल है। इट्स मेरे ख्याल में सब लोगों को पॉवर्टी का अंदाजा है कि भाई गरीब कौन है। The people who don't have sufficient opportunities are the people who are lagging behind in terms of opportunities. जिसके पास health opportunities थोड़ी हो, जो access to health थोड़ा हो, access to food, access to shelter जो appropriate ना हो, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो acceptable minimum standard होता है, उस minimum standard के ऊपर अगर उनकी access ना हो तो वो गरीब है। इसलिए तो मेरे ख्याल में मैंने ये एग्जांपल लेके आया कि भाई इट मेक्स सेंस फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डिसिप्लिन, कि आप लोग जो है वो कौन से डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं। सिनेरियो का मतलब एक सिचुएशन में आप लोगों के सामने शेयर किया, उस सिचुएशन के बेस पे हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप की। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के नतीजे में हम एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डेवलप कर रहे हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं। व्हाई इनकम द प्रोविजन ऑफ कर्ज हसना to the poor people we believe will bring and upbringing in the living standard of the people। उसकी लिंक हमने ऐसी की, ये provision of free interest loan क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर हम गरीब लोगों को देंगे they will utilize it for productive and income generating opportunities। अगर उसी पैसों को वो इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज में लगाएंगे, उससे रोजगार करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर लगाएंगे, तो क्या होगा, उनकी अल्टीमेटली इनकम बढ़ जाएगी। जब इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्ड कर सकेंगे, वो क्वालिटी हेल्थ को अफोर्ड कर सकेंगे, वो क्वालिटी शेल्टर को अफोर्ड कर सकेंगे, और वो क्वालिटी फूड को अफोर्ड कर सकेंगे। दिस हाउ वी लिंक इट। ठीक है, so this is how we can develop a logical and theoretical framework of this thing। अच्छा, क्या हम समझते हैं कि भाई डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक की भी कोई रोल होती है? मसलन जब when it comes to the provision of free कर्ज हसना to the poor people, क्या इसमें इस बात का लिहाज रखा जाए कि ये ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जाए या कम उम्र के लोगों को दिया जाए, या दरमियानी उम्र को लोगों को दिया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव होगा? क्या जब हम पैसों को इन लोगों को दे रहे हैं, क्या हम इसमें इसका लिहाज रखें कि भाई कि वो बंदे जो एजुकेटेड हैं अगर उनको दें तो क्या उनकी एजुकेशन से बेटर अपॉर्चुनिटीज में उसकी हेल्प हो सकती है, या एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं है सिरे से उसमें? तो इसमें जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बंदा कहाँ से है, उसकी एज क्या है, और उसकी सेक्स क्या है, और इसकी जेंडर क्या है वगैरह, इसकी एजुकेशन लेवल क्या है, तो ये सारी चीजें हम उसमें उसको लेके आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, हम चाह रहे हैं यहाँ पे ये जो इंटरवेंशन है ना, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और माइक्रो फाइनेंस वाला या कर्ज हंसना वाला जो इंटरवेंशन है, ये वो कॉज है, काउस, बिकॉज this will affect the income of the poor people। अब आप खुद से मुझे बताएं इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा बना? बिकॉज
जी, इनकम, यस, नहीं लोन तो है, लोन वो है, लोन कॉज है जिसकी वजह से पुअर जो पॉपुलेशन है उनके इनकम में चेंज हम आएगी। तो लोन इज बेसिकली इट्स वन ऑफ द कॉस्ट वेरिएबल्स। जी, जबरदस्त, अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो माशाल्लाह आप लोगों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज ये almost everyone is giving a right answer to the question, alhamdulillah. तो income जो है, it's basically a dependent variable, and this is primarily we are trying to focus, on the income of the people, income of the poor people, जिससे further इनके फर्दर जो है वो जो अपॉर्चुनिटीज में फर्क आएगा। तो अभी हमें 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 दो किस्म के चीजों का पता चला। एक ये, मैं रिपीट कर रहा हूँ सईद मुदस्सिर, शायद मैं जब ये कंक्लूड करूंगा इंशाल्लाह मैं रिपीट करूंगा आपके लिए, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चला कि दो किस्म के कॉजेज है। एक डेमोग्राफिक वेरिएबल जो है वो भी हमें इंपॉर्टेंट दिखती है, क्योंकि एज इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेरिएबल, बिकॉज एज इज ए प्रॉक्सी ऑफ एक्सपीरियंस। अगर ज्यादा एज वालों लोगों को अगर आप ऑन एवरेज पैसे देंगे, so probably they have more experience, and that is why they will be capable to utilize the money in a more productive way. तो इसलिए हम एज हमें दिखता है कि इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन, या एजुकेशन बेसिकली इट्स रिप्रेजेंट the skills of the individuals. So we do believe that by variation across the skills of the people will bring different kinds of variation in the income. So we do believe that by ये जो education है, it seems one of the important variables. इसको भी हम डाल रहे हैं। अच्छा जी, दोबारा मैं आप लोगों के लिए इसको रिपीट कर रहा हूँ। हम किस तरह से इन वेरिएबल्स जो आइडेंटिफाई हुए इस सिनेरियो के अंदर, कौन सी वेरिएबल्स कहाँ पे किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। सो फॉर दैट इट मेक्स सेंस कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि वो कर्ज हंसना गरीब लोगों को प्रोवाइड करे। किस पर्पस के लिए? इनकम जनरेटिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि गरीब लोगों की जो अर्निंग है उसमें इजाफा होगा। क्या होगा उससे फर्दर? उससे ये होगा कि दे विल बी हैविंग मोर अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी फूड, क्वालिटी शेल्टर एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज। और ये सारी चीजें अगर इम्प्रूव कर जाती हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो इम्प्रूव हो रहा है। इसमें हमने दो तरह के वो वेरिएबल्स या जो कॉजेज हैं, इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। जी जी, अल्टीमेटली द पर्पस इज टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड टू सी लेस पुअर पीपल इन द कम्युनिटीज, सो दैट इज द अल्टीमेट पर्पस। लेकिन हम इसको इस तरह से उसको कर रहे हैं और ऐसे हमने लिंक किया, और विच मेक्स सेंस, which is logical and which makes sense. Theories में भी इस तरह के financial development के बहुत सारे theories हैं कि if you create or provide sufficient financial opportunities for the poor people in terms of credit, saving, ये जो micro transfer, micro remittances, receiving, sending to handle financial opportunities, तो इससे क्या होगा कि वो इन opportunities को utilize कर लेंगे। इनके utilization से क्या होगा, वो अपने अर्निंग्स और इनकम अपॉर्चुनिटीज को फर्दर इंप्रूव कर सकेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो फर्दर हमने यहाँ पे जो अपने कॉजेज हैं इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। एक जो पार्ट है इसको हमने वो गवर्नमेंट की वो पर्टिकुलर इंटरवेंशन ऐड कर ली कि द प्रोविजन ऑफ दैट कर्ज हंसना टू द पुअर पीपल, एक बात। दूसरे साइड पे हमने थोड़े से डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई age, which is a proxy of experience, and education, which is a proxy of the skill of the individuals, ये variables भी important हैं और हमें अपने policy level में इनको भी शामिल करना चाहिए। अगर नहीं हुए तो हम हटा देंगे फिर, ठीक है। So based on this understanding, now we are trying to develop our hypothesis. कैसे? एक ये कि क्या micro access to कर्ज हंसना program is whether this program
is capable to increase the income of the poor people. एक बात हम ये टेस्ट करना चाहते हैं और इसके बेस पे हम ये पॉलिसी डिवाइस कर लेंगे और इसके बेस पे हम ये पॉलिसी पर सजेशंस देंगे कि इफ द प्रोग्राम इज इफेक्टिव सो वी नीड टू replicate these kinds of programs in similar regions for similar people in other places. तो इससे इसका इफेक्ट ये होगा. नंबर 2, दूसरी जो हम हाइपोथेसिस अपनी डेवलप कर रहे हैं, टेस्टेबल हाइपोथेसिस, कि एज, where age doesn't affect the proper utilization of loan. हम इसमें ये भी चाह रहे हैं कि अगर लोन के यूटिलाइजेशन में एज, which is supposed to be a proxy of the experience of the individuals, क्या वो कोई रोल है, एज का कोई इंपॉर्टेंट रोल है? अगर इंपॉर्टेंट रोल बनता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट रोल बनता है तो हम इसको एज को भी एज ए पॉलिसी वेरिएबल शामिल कर लें, नहीं बनता तो हम हटा देंगे. 3, education which is supposed to be a proxy of the skills of individuals. हम इसमें भी इंटरेस्टेड हैं. क्या एजुकेशन अक्रॉस, जो एजुकेशन वेरिएशन इन एजुकेशन अक्रॉस द इंडिविजुअल्स, क्या इसमें कोई वेरिएशन से लोन के यूटिलाइजेशन में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो अगर पड़ता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी वेरिएबल बनेगा और इसको हम बुनियाद बना देंगे. अगर नहीं पड़ता तो फिर हम इसको हटा देंगे. Now you got the point. We just created a scenario. From that scenario, we developed a research problem. From the problem, we justified the variable, the roles of the variables, and its interconnection with each other. And from that, we developed the hypothesis. And now from the hypothesis, we'll move to the estimation techniques वगैरह. और फिर based on that, हम estimation से अंदाजा लगाएंगे कि क्या ये variables जो है, ये इनकी important role है policy level पे. अगर है तो वो कितना है when it comes to the comparison of all these three different kinds of components. तो उसमें सबसे important जो है वो कौन सा है? क्या access to program ज्यादा important है? क्या education लोगों की ज्यादा important है? क्या जो है वो वो है क्या age लोगों की important है? ताकि जब भी हम इस तरह के interventions करें तो इसके साथ additional ये demographic information हम share करें. ठीक हो गया. Next, अब हम जा रहे हैं दूसरे उसमें से. Now we identified the variables, its roles, and how we can place it. The next is what we can do is to collect the data from the community on all these variables. Income का data उठाने, वहां पे हमें income का data चाहिए होगा at the point of intervention. Okay. तो वो उसका डेटा हमें चाहिए होगा जिस टाइम पे आप इंटरवेंशन कर रहे हैं, लोगों को जब ये कर्ज हसना प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टाइम पे उसका इनकम का डेटा ले. आपकी जो अर्निंग है उस लेवल पे वो क्या है, आपकी जो सेविंग लेवल है अब इस पॉइंट पे वो क्या है, आपकी जो कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर्स हैं वो इस लेवल पे वो क्या है. और फिर जब इंटरवेंशन पूरा हो जाए, सपोज करें उसको 1 साल हो जाए, वो मैच्योर हो जाए, साल 6 महीने 1.5 साल अकॉर्डिंग टू द इंटरवेंशन, और फिर उसके हिसाब से आप देखेंगे कि अब वापस दोबारा से उन लोगों के पास जाएंगे तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से भी दोबारा से वही इंफॉर्मेशन लेंगे और जो हमारी कंट्रोल ग्रुप है उनसे भी दोबारा वही इंफॉर्मेशन लेंगे. और इन इंफॉर्मेशन को जब आगे जाके प्रोसेस करेंगे किसी अप्रोप्रिएट एस्टिमेशन टेक्निक से, then we'll be able to know whether the difference between the incomes of the control and experimental group on average is sizable, is statistically different. अगर है तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई इंटरवेंशन इज इफेक्टिव. अगर नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि भाई नहीं, इफेक्टिव नहीं है. इसी तरह एज की भी अपनी वो है इंपॉर्टेंस है और एजुकेशन की भी अपनी इंपॉर्टेंस है और उसको हम एम्पिरिकली चेक करेंगे whether it works or otherwise. ठीक हो गया. So data can be collected from the community in the intervention areas. Data can be collected at the time of intervention and after the utilization of the credit, say after 1 year. जी,
तो हमें डेटा 2 पॉइंट्स पे लेना है। एक, जिस टाइम पे आप इंटरवेंशन कर रहे हैं, इंटरवेंशन का मतलब है कि जिस टाइम पे लोगों को आप वो कर्ज हस्ना प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे, यानी बिफोर एट द पॉइंट ऑफ इंटरवेंशन उस लोगों की जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का डेटा है वो क्या था, और आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट 1 साल के बाद दोबारा से उन्हीं लोगों से उन्हीं वही वेरिएबल्स के बारे में दोबारा से इंफॉर्मेशन वो लेनी होगी ताकि हम कंपेयर कर सके एक दूसरे के साथ। अब आप लोगों के जहन में जो हमने टेक्निक्स पढ़ी, वेदर इट्स ए कॉजेशन काइंड ऑफ थिंग और रिग्रेशन काइंड ऑफ थिंग और कोरिलेशन काइंड ऑफ थिंग, तो आप मुझे बताएं कि इस जो चीजें हमने पढ़ी उसको बुनियाद बना के हम जो मॉडल डेवलप करेंगे वो रिग्रेशन का होगा या कुछ और होगा। जी, रिग्रेशन। अच्छा जी, regression. Okay, and what will be your justification for this regression? Why regression? Why not the other one, the correlation kind of thing, or other kind of things? जी, फजल मन है कि क्या? हाँ, फजल मन शाह। बाकी लोगों से भी है ये क्वेश्चन। Cause and effect, yes, I do agree with you, Madiha. It's a cause and effect relationship, and that is why regression is the most appropriate estimation technique. Because it's cause and effect. Yes, you know, the provision of Qarz Hasna to the poor people, it's going to be a cause to bring a change in the income of the poor people, which is an effect of it. Similarly, age is a cause which will affect the income of the poor people. Similarly, education is a cause which will affect the income of the poor people. Yeah, so if we look at all these three different variables, it shows a cause-effect relationship, and based on the same understanding, we need to develop a model like regression. It's more appropriate because it's explicitly a cause-effect relationship. ठीक हो गया? सर जी चाहता बोल गया तो बना क्या? बस 10 ठीक भाई। Perhaps. No, it's just a break of say 30 seconds. Ji Taqi Khan, yes, you're very right, because causation will not be going to use because the direction is down. Correlation is not be used because we are interested the effect of these three, say, set of variables on the dependent variable, which is the income of the poor people. So yes, you're very much right कि वो नहीं होगा। लेकिन वहां पे शायद वो जो we can compare the educated people of that community with the uneducated people on average. So on average इसका रोल है, education का रोल है earning में। Sabiha, are you sure? So can we use fact data for degree purpose? Okay. जी, so data analysis के लिए regression seems the most appropriate technique at this point in time, because it will help us to evaluate the impact assessment of the Qarz Hasna microfinance program. This is what we are interested in. अच्छा जी, अब ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे एक टेस्ट आ गया, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा टी टेस्ट का, पेयर सैंपल टेस्ट। यहाँ पे टी पेयर सैंपल टेस्ट। How many people, how many of you know about this T test and why we use this T test? चले मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूँ। अच्छा, नो आइडिया। अच्छा, जिनको आइडिया है काइंडली वो बता दे जरा। इट्स वेरी कॉमन, अगर आप लोगों ने फर्स्ट कोई भी कोर्स पढ़ी हो स्टैटिस्टिक्स में तो वो दैट गिव्स यू अ सेंस के व्हेन, हाउ,
what is this t-test and how we can use it for different kinds of purpose. Listening first time test about mean used for significance. Okay, t-test is done to know this doesn't happen by chance. Yes, to see the data I told. Okay, to know significance of the model. MashaAllah, अच्छा जबरदस्त है यार आप लोगों की जो explanations हैं it's quite relevant. Comparison, it shows that whether both the sample groups are different from amazing. Okay, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिसको आइडिया नहीं है मैं उसको बता देता हूँ. अच्छा जी, अब हमारी जो प्राइमरी इंटरेस्ट है ना वो तो इसमें है कि whether the intervention designed by the government for uplifting the socioeconomic condition of the poor people by enhancing their income opportunities. So we are interested whether this intervention is effective or otherwise. तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे में, हम ऐसे वो कर सकते हैं कि बिफोर आफ्टर का डेटा लें, ठीक है, और बिफोर आफ्टर का डेटा लेके यानी बिफोर द इंटरवेंशन टाइम लोगों की जो एवरेज अर्निंग थी वो क्या थी एंड आफ्टर द इंटरवेंशन जो एवरेज अर्निंग है वो क्या थी, एंड दिस विल गिव अस अ वेरी गुड सेंस if the difference is positive and statistically significant, so it shows that this intervention is effective. So the basic purpose of this test was to find the average difference in terms of income before and after joining the program. So agar aap log dekhe, so the mean is around 7.639. So the data is reported in terms of thousands of Pakistani rupees. तो अगर आप देखें तो डिफरेंस से पता चलता है कि कोई 7,500 रुपए के दरमियान वो डिफरेंस आता है कि बिफोर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम्स एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम्स द एवरेज अर्निंग डिफरेंस इज अराउंड 7,500 पाकिस्तानी रुपीस. और अगर हम इसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को देखें, अगर आप लोग देखें जरा इसकी जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू है, सो इट्स वेरी हाई, और इफ वी लुक एट सिग्निफिकेंस वैल्यू इट्स क्वाइट लो. सो इट शोज it is very safe to conclude that yes, intervention in the form of qarz hasna in poor communities to increase the income of the poor people is statistically a significant and successful intervention. At least यहाँ से हमें पता चला कि हाँ ये जो intervention है ना ये effective है, because the difference in terms of earning of the people before joining the programs and after joining the program is very much high. The difference is very high, and that is why we couldn't find statistical evidence to accept कि ये जो है दोनों शक्लों में लोगों के जो earnings हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा. So we reject our first null hypothesis, that is intervention या microfinance program in the form of provision of qarz hasna to the poor people is not capable to increase earning of the poor people. So we reject that null hypothesis and conclude this intervention in the form of providing qarz hasna to the poor people to increase their income opportunities is statistically significant. तो ये तो बस first से तो हमें पता चला कि माशाल्लाह the intervention is a good intervention, and based on this understanding we may devise a policy कि yes, similar communities, the similar kind of intervention is supposed to be more productive or more efficient to bring transformative changes in the incomes of the people and hence in the living styles of our living standard of the people. That is why similar programs can be should be encouraged for the similar communities across the different places. एक उससे तो हमें ये पता चला. समझ आई मेरी बात की? जी, ओके. अच्छा जी, ये कैलकुलेशंस में बहुत सारी चीजें हैं इसलिए मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया एट दिस पॉइंट. जो हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे जो जिस चीज को स्टैटिस्टिक के ऊपर हमने फोकस करना है वो मीन डिफरेंस है.
तो ये बेसिकली आपको एवरेज डिफरेंस वो बता रहा है, जो तकरीबन 7,639 रुपए का वो बनता है। दूसरी हमारे पास जो मीनिंगफुल स्टेटिस्टिक है वो टी टेस्ट है, कि वेदर वी एक्सेप्ट मीन द डिफरेंस। ये स्टेटिस्टिकल जो फिगर आया कि दोनों ग्रुप्स के अंदर यानी बिफोर आफ्टर की जो गैप है, इसमें से जो डिफरेंस आया, क्या ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है? So normally for a large sample size, when the sample size is more than 30 in quantitative context, or when our population is sufficiently large, say more than 30, so and the t calculated values 2 or more, so we it is safe to conclude that yes, we need to accept this result. तो अगर हम यहाँ पे t calculated value देखें, it's more than 2, यानी 61 है, it's very high. And if we look at to statistical significance of this, that we might be wrong in our decision. So the probability that we might be wrong is very much low. It's around 0.0000. That the probability that we might be wrong in our statement is very low. So that based on these t calculated value and probability value, we may conclude कि जो है the program is effective and it's significantly bringing increase in the income of the poor people. डेटा जो है उसी कम्युनिटी से लेंगे आप, यानी जिस के साथ आप ये इंटरवेंशन कर रहे हैं ना, उसी कम्युनिटी से, कंट्रोल ग्रुप से भी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से, दोनों से। उस टाइम पे आप सब 1000 लोगों का डेटा लिया, उनकी अर्निंग, सेविंग, कंजम्पशन, इसमें जो जिस वेरिएबल में आप इंटरेस्टेड थे वो सब का डेटा लिया आपने एक साल। फिर कुछ आधों को आपने पैसे दे दी, आधों को जो है वो आपने वो नहीं दिए। जिनको आपने पैसे दिए कर्ज हसना के तौर पे, आप चाह रहे थे कि आप देख सकें कि प्रोविजन ऑफ द कर्ज हसना whether it is making a difference in terms of increasing the income of the poor people, और जिनको नहीं दिया आप चाह रहे थे कि भाई वो देखें, इनके साथ इसकी कंपैरिजन कर सकें। तो ये दोनों जो है हमने इस तरह से वो कर लिया, और डेटा इन्हीं दोनों ग्रुप्स के हवाले से ही होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, दो किस्म की जो है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी हमने डाल दी थी, और साथ में एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी वो डाल दी थी। नल हाइपोथेसिस बेसिकली ये बहुत बेसिक दूसरी तरह के डिस्कशन में हम चले जाएंगे, लेकिन नल हाइपोथेसिस जो हाइपोथेसिस है क्वांटिटेटिव और जो ऑब्जर्वेबल हाइपोथेसिस या क्वांटिफाइबल हाइपोथेसिस होती है और टेस्टेबल हाइपोथेसिस होती है, इनकी दो कैटेगरीज हैं। एक वो जो नल, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल वही होती है जो हम which as it is obvious from its name, which we want to nullify, but we need to have a reason for it. An alternative, which the opposite of the null hypothesis. So we do understand from theoretical importance, we do understand that provisions of financial support to the poor people for income generating opportunities should increase the income of the people. But our null hypothesis, it shows that it's not, the provisions of the Qarz Hasna is not capable to bring increase in the poor income of the poor people. So that is why we developed that hypothesis in that form. So null hypothesis basically the hypothesis which we want to nullify. The alternative is the otherwise of it. जी, अब अगर इसी डेटा सेट का अगर आप लोग देखें, यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स हमने शामिल कर दिए। अगर आप लोग देखें, एज है, लेवल ऑफ एजुकेशन है, ये भी हमने ऐड कर लिया, और प्रोग्राम स्टेटस है। प्रोग्राम स्टेटस का मतलब यह है कि वेदर ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज पार्ट ऑफ द कर्ज हसना प्रोग्राम और अदरवाइज। तो इस वेरिएबल को हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने डमी वेरिएबल क्रिएट किया, जिसको हमने 1 और 0 के नंबर से रिप्रेजेंट किया। 1 ऑल दोज इंडिविजुअल हु वर पार्ट ऑफ द कर्ज हसना प्रोग्राम, 0 अदरवाइज हमने किया। लेवल ऑफ एजुकेशन को हमने रिपोर्ट किया ईयर्स ऑफ स्कूलिंग्स के हिसाब से, कि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, फॉर एग्जांपल 10वीं को 10 असाइन किया, 12वीं को 12,
5 वीक तक जो पढ़ा है वो 5 असाइन किया इस वेरिएबल की शक्ल में, न्यूमेरिकल वैल्यूज की शक्ल में हमने उसको किया. सो जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. 10 years of schooling, 11, 12, 13, 14, 15, 16 वगैरह वगैरह. ठीक हो गया. एज को हमने दोबारा से ईयर्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है. अगर आप इन सारे वेरिएबल्स को देखें, इन सारे वेरिएबल्स को अगर आप लोग देखें, तो ऑल द वेरिएबल्स हम कह रहे हैं कि भाई थ्योरेटिकली इट मेक्स सेंस कि एज इज सपोज्ड टू बी अ प्रॉक्सी of the skills of individuals. So that is why it should have a positive sign. तो आप लोग देखें इसका पॉजिटिव ही साइन है. इसी तरह से जो है लेवल ऑफ एजुकेशन भी जो है, इट्स अ गुड थिंग. द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स is high, so they will be capable to use their loans in more productive or engaging income generating opportunities. तो इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, लॉजिकल उसमें. और इस तरह के प्रोग्राम स्टेटस में individuals who avail the opportunities to be part of the कर्ज हसना programs, तो उसमें भी नहीं, ये 551 नहीं है, इट इज 0.551. अगर आपको सही तरह से दिख रहा है तो अच्छा जी. तो अगेन ये पॉजिटिव है. सारे वेरिएबल्स अब इंटरेस्ट को अगर आप देखें, इट मीन एज is a good proxy and it has its own importance. लेवल ऑफ एजुकेशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है और प्रोग्राम स्टेटस का भी इंपॉर्टेंस है. किसी एक वेरिएबल की इंटरप्रिटेशन करके वो अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा सेंसिबल हो जाएगा आप लोगों के लिए. अब आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी. प्रोग्राम स्टेटस इंटरसेप्ट इज 4.397. अगर हम देखें तो इसमें हमारी जो वेरिएबल है प्रोग्राम स्टेटस का, जिसमें हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो वो थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीस की शक्ल में हम प्रोवाइड कर रहे हैं. इसलिए इसका यूनिट ऑफ अकाउंट जो है दैट इज 1000. तो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, अगर आप इसको इसके साथ अगर आप इसको कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि थाउजेंड्स ऑफ रुपीस हैं में कन्वर्ट हो जाएगा. तो प्रोग्राम स्टेटस की जो कोफिशिएंट है दैट इज 4.397. कहने का मतलब ये है, मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं, अब जरा समझने पे गौर करें. एनी इंडिविजुअल who is becoming part of the Qarz Hasna program of the government, their average earning increases by 4,397 rupees, which makes sense. The people who avail additional income generating opportunities, their income is supposed to be high, so which makes sense. Isi tarah level of education. If the level of education of an individual poor increases by 1 unit, say by 1 years of schooling, their increase in income is, their average increase in income is 2,657 rupees, Pakistani rupees, keeping the effect of all the other variables constant. This is how we can interpret it. Third, age in years में अगर आप लोग देखें, if age of an individual increases by 1 unit, say by 1 year, so the increase in the income of the poor people increases by say 551 rupees. वो 1000 जो है वो एक यूनिट है, उसके साथ अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों को उसमें अंदाजा हो जाएगा कि कितना जो है वो ब्रिंग चेंज लेके आता है. अब आप इसकी इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस के ऊपर अगर आप लोग देखें तो एज इन ईयर्स भी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी दैट वी माइट बी रॉन्ग कि एज सिग्निफिकेंट नहीं है तो बहुत थोड़ी है. अगर आप लोग देखें जरा, दैट इज 0.00. इसी तरह लेवल ऑफ एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, तो आप इसका अंदाजा लगाएं कि द प्रोबेबिलिटी दैट वी माइट बी रॉन्ग इज वेरी लो. इसलिए हम कंक्लूड करेंगे कि लेवल ऑफ एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल और प्रोग्राम स्टेटस इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल. अब कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी पुअर कम्युनिटी में इस तरह की रिप्लिकेशन करेंगे और अगर आप गरीब लोगों को टारगेट करेंगे कि भाई वो पैसे सिर्फ इनकम जनरेटिंग पर्पस के लिए यूटिलाइज कर दें, साथ में लेवल ऑफ एजुकेशन को भी कंसिडर कर दें,
और साथ में उनकी एज भी कंसिडर कर दें, तो इन तीनों वेरिएबल्स के एक साथ मिलाने से या कंसिडर करने से आपकी जो सक्सेस प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो इसलिए पॉलिसी लेवल पे हम इसको कंसिडर करेंगे कि व्हेन इट कम्स टू द पुअर पीपल while having more education on average, so इसको करेंगे, then the probability of utilization of this कर्ज हसना for productive purpose becomes high. इसी तरह एज में भी, मसलन अगर आप यंग लोगों को टारगेट करेंगे, 18 साल के लोगों को, 17 के साल के लोगों को, 20-21 को अगर आप करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनको ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिंदगी का वो नहीं होता, then their probability of utilization of this loan for productive purpose वो थोड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो फोकस है ना शाहीन, वी नीड टू फोकस ऑन जस्ट दीज बीस यानी कोफिशिएंट्स उसके ऊपर, और टी के ऊपर, टी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेटेड, और सिग्निफिकेंस की ये हमारे पास है। एस्टिमेट्स पे हमने देखा कि भाई whether the estimates have the signs which is matching with the theory or which is not against the logic, तो अगर वो हैं तो तीनों हैं। हम कह रहे हैं कि एज इज ए प्रॉक्सी ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए। वी बिलीव दैट लेवल ऑफ एजुकेशन इट्स ए प्रॉक्सी ऑफ द स्किलफुलनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स, सो इसलिए इसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए। ये इट्स हमें पता है कि भाई अवेलिंग द कर्ज हसना programs or facilities for productive and self-employment, it's a good thing because it increases the financial opportunities of the poor people and will ultimately bring a positive change in the income of the people. So it makes sense. तो तमाम जो चीजें हैं वो पॉजिटिव भी हम assume कर रहे थे, पॉजिटिव साइंस भी है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो प्रोग्राम की जो स्टेटस है वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है एज कम्पेयर टू द लेवल ऑफ एजुकेशन, फिर लेवल ऑफ एजुकेशन ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है एज इन ईयर्स के मुकाबले में। तो अगर हम देखें पॉलिसी लेवल पे क्या इस तरह के प्रोग्राम्स दूसरी रीजन्स में होने चाहिए, सो वी डू हैव द स्टैटिस्टिकल एविडेंस ऑफ इट, यस होनी चाहिए। क्या लेवल ऑफ एजुकेशन को कंसीडर किया जाए व्हाइल प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर पीपल, यस इसको कंसीडर किया जाए क्योंकि इससे यूटिलाइजेशन में काफी फर्क पड़ता है। क्या एज को कंसीडर कर लिया जाए, यस एज को भी कंसीडर कर लिया जाए क्योंकि ऑन एवरेज एज में इंक्रीज से लोगों की एक्सपीरियंस बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ने से उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ लोन में इजाफा होगा और वो सिग्निफिकेंटली यूटिलाइज हो जाएगी। So these are some simple things and जिसको बुनियाद बना के हमने एक सिनेरियो क्रिएट की और हमने इससे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप किया और फिर उससे आगे हमने जो है उससे रिसर्च हाइपोथेसिस, फिर उसको स्टैटिस्टिकली टेस्ट किया और उसके बाद हमने इसकी इंटरप्रिटेशन और पॉलिसी लेवल के ऊपर जो है हमने बात की इसकी। जी अब क्वालिटेटिव जो है वो डिफरेंट हो सकता है, वो या तो ये कि लोगों के परसेप्शंस के ऊपर रिलाई कर दें कि वो क्या समझते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स में कोई खातिर फर्क आया है कि नहीं है, उनके साथ इंटरव्यूज करें और इनके इंटरव्यूज के नतीजे में जो है वो करें, देखिए टीम्स डेवलप कर दें, उनके इकोनॉमिक जो है इफेक्ट्स और जो सोशल इफेक्ट्स है वो और उन के नतीजे में जो है वो कर ले, तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वो क्वालिटेटिव के साइड पे फिर वो चला जाएगा। सर हमने खुद से इसकी रिकॉर्डिंग की हुई है क्योंकि सम पीपल आर आस्किंग, मैंने अलाउ किया हुआ था लोगों को पार्टिसिपेंट को कि वो रिकॉर्ड कर दे, तो काइंडली जिन जिन ने रिकॉर्ड किया है दे मे शेयर द रिकॉर्डेड लेक्चर विद ईच अदर इन द ग्रुप, so each one will be able to get benefit of this recording. I hope so. ये दूसरा वाला है लेकिन ये थोड़ा सा आई एम नॉट श्योर कि ये आप लोगों को कहीं ऐसे ना हो कि कंफ्यूज कर दें, क्योंकि फर्दर कोरिलेशन से भी हमें पता चलता है इन वेरिएबल्स का कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमें मॉडल के अंदर वो होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टू गिव यू अ फ्लेवर अबाउट द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स and how it works and what is important while modeling quantitative models or behaviors, and this is all from my side.
Now, if you'd like to ask any question, anything related to your personal work, anything, तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं. Now it's your time. अगर टाइम मिले, ये मैंने एक क्रिसवेल की जो किताब है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड्स के हवाले से, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये ये फ्लेवर इज ठीक है. बहुत सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट, जो देखें जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो तबीयत पे भारी होती हैं. चस्केदार चीजें जो हैं वो अक्सर नुकसानदेह होती हैं. जी. देखिए एक साहब जो है हम पूछ रहे हैं कि थ्योरेटिकल और वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में, theoretical framework mostly it's based on a theory, and the theory identify the factors, what is relevant and what is not, and how these are interconnected with each other. Conceptual framework, mostly when we don't have any explicit kind of theory or explanation, but based on our own understanding, we identify the components, and we interconnect these components with each other according to the situation. So both तरह से वो होता है. So probably this is one of the important difference between these two kinds of situation. जी. जो स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट्स होते हैं वो थोड़े से वो डिफरेंट होती हैं. मैं दोबारा से इसके ऊपर आ जाता हूँ. देयर आर टू काइंड्स ऑफ कोएफिशिएंट, वन वी कॉल इज द स्टैंडर्डाइज एंड द अदर वी कॉल इज नॉन स्टैंडर्डाइज. चलिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आप 2 मिनट के लिए मुझे तवज्जो देंगे, सो आई एम श्योर कि ये आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे. अगर हम एज को देखें, सो एज की जो इट्स अ वेरिएबल एंड इट्स मेजरमेंट यूनिट इज ईयर्स. हमारे पास है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल. लेवल ऑफ एजुकेशन ये भी इन ईयर्स रिपोर्ट हुआ है. लेकिन इफ यू लुक एट टू द प्रोग्राम स्टेटस, इट्स अ वेरी मच डिफरेंट वेरिएबल. इट्स अ नॉमिनल वेरिएबल. 1 और 0 के हिसाब से ये रिपोर्ट किया गया है. 1 मींस कि the particular characteristics exist. For example, if an individual belongs to the experimental group, then the program status for that individual is 1. If an individual belongs to the control group, where he is not getting the facility of Qarz Hasna, so the program status for that individual is 0. तो अगर हम देखें तो measurement units across the variables, it's very much different. Kindly आप bear with me. आप मैं जब एक क्वेश्चन को आंसर कर दूं, फिर बाकी आप लोग पूछिए, मुझे याद रहेगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उतनी तेजी के साथ वो आते रहते हैं कि फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि कितना जो है वो कौन सी वाली क्वेश्चन के ऊपर हमने फोकस करना है. अब अगर स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट्स को हम देखें तो ये स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट्स हैं. Now these coefficients are directly comparable with each other. ये दोनों जो है ये very directly comparable नहीं है. यहाँ पे unstandardized coefficient, because the measurement unit of one variable is different from the measurement units of another one. So that is why standardized coefficients is directly comparable with each other, while the non-standardized coefficient is not directly comparable. That is why we need to calculate standardized coefficient. I hope I answered your question. जी. कुछ एक मिस थी, वो पूछ रही थी वेरिएबल्स और कुछ इस तरह का वो था. आई एम नॉट श्योर व्हाई एवरीवन प्रेफर्स क्वालिटेटिव मेथड्स. नहीं, मेरे ख्याल में एवरीवन इज नॉट प्रेफरिंग. इट डिपेंड्स on the nature of your research question, which will define whether you need to go for mostly the exploratory kinds of studies and exploratory kinds of questions, where the questions starts with mostly from how kinds of questions and why kinds of questions. So we try to answer these questions in qualitative context, and what kinds of questions mostly we try to answer in quantitative context. The difference between variables, concepts and indicator. नहीं, ये थोड़ा सा मैं इसको बता दूं. वेरिएबल इट्स अगर आप देखें, अगर हम देखें, चलें सपोज आई एम गिविंग यू द एग्जांपल गुर्बत. तो ये एक कॉन्सेप्ट है. इसी के नतीजे में अगर हम हाउ टू मेजर इट, तो अगर हम देखें कि भाई एन इंडिविजुअल हु इज नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट अर्निंग इज सपोज टू बी पुअर. ये हमने उसको उस कॉन्सेप्ट के अंदर उसकी एक डेफिनेशन डेवलप की और इंडिकेटर उसके लिए यूज किया ये पॉवर्टी लाइन. एन इंडिविजुअल हु इज नॉट एबल टू अर्न से $2 per day is supposed to be poor. Concept गुर्बत, operational definition
वो any individual who is not below that not capable to earn $2 per day, तो वो हमने वहां पे एक बेंचमार्क डेवलप किया, और इस बेंचमार्क के नतीजे में हमारे पास जो है जोन से वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट बना, से द पुअर पॉपुलेशन, तो वो आपका एक वेरिएबल बना. So this is how we can differentiate between these two, are among these kinds of things. रिसर्च फिलोसफीज जो है ये मुस्तकिल तौर पे एक टॉपिक है और मुस्तकिल एक एरिया है. I'll try my best. Research philosophy is basically how you see the world. It's that depends on your research philosophy. If we believe that material knowledge and material reality is the ultimate reality, and whatever is not material is not important, so this is a very particular worldview which is grounded in a particular world viewpoint, a particular रिसर्च फिलोसफी. साइंस के अंदर अगर आप लोग देखें, वहाँ पे लोग परसेप्शंस की बातें नहीं करते. वहाँ पे लोग जो है वो व्हाट यू बिलीव इन एंड व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डिसलाइक, इसकी जो है वो बातें नहीं करते. बट व्हाट एग्जिस्ट इज रियल एंड व्हाट नॉट एग्जिस्ट इज नॉट रियल. So that is why material realities वहाँ पे is important and non-material realities are not important. दो के cultural realities बहुत सारी ऐसी हैं, religious realities हैं जो कि non-material है और वो exist करती हैं. लेकिन अगर हम साइंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से इसको समझने की कोशिश करें, then probably will not be able to find a solution to our answers, to find an answers to our questions. तो मसलन the existence of God, it's a non-material reality. साइंस इसको एड्रेस नहीं कर सकती. the ये जो है concept of आखिरा जो है, it's a very important concept. आपकी मुसलमानी तब तक कामिल हो नहीं सकती जब तक आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आखिरा, पैगंबर, किताबें, कलम, कुर्सी, इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं रखते. लेकिन साइंटिफिक प्रोसेस से अगर हम इसको करेंगे तो शायद विल नॉट बी एट दिस पॉइंट इन टाइम इज नॉट एबल टू फाइंड एन आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. तो दिस इज एक सोच के नतीजे में ये वाली जो चीज़ें हैं. बहुत सारी जो है वो दूसरे भी है कि बहुत सारे फिनोमिनास, बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, और इसकी कंस्ट्रक्शंस जो है उन लोगों के परसेप्शंस के नतीजे में, उन लोगों के एक्सपीरियंस के नतीजे में किया जा सकता है जो लोग एक्सपीरियंस करें. अगर आप किसी पूछे कि भाई महरूमी क्या है, या जो पॉलिटिकल महरूमी है वो क्या है, या माशी महरूमी क्या है, या सोशल महरूमी क्या है, सोशल एक्सक्लूजन क्या है, तो वो लोग जो सोशली एक्सक्लूडेड हैं वहां पे जाएं, उनके पास, उनसे पूछें, उसके अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में, और आप डेवलप करने के भाई ये है. तो आप इस रिसर्च फिलोसफी में यकीन रखते हैं कि भाई देयर इज नो सिंगल रियलिटी, देयर आर मल्टीपल रियलिटीज एंड रियलिटीज कैन बी सोशली कंस्ट्रक्टेड. तो आप इसमें यकीन रख रहे हैं. सो इट्स बेसिकली योर कंस्ट्रक्टिविज्म, यू बिलीव इन कंस्ट्रक्टिविज्म. Jason, my question was in the morning session that if I wasn't compare semester and system of education in Pakistan, sir. Mohammed Arif X, sorry, वो टिकता ही नहीं है अपनी जगह पे. मैं interpret actually defines the points when only variables non-zero, there is not zeros. Okay. Okay. अब देखें यहाँ पे कि when your intercept, in some cases the intercept will be very sensible and it gives us very meaningful information. If that is the situation, then we must consider the sign as well as the magnitude and its statistical importance. So for all other things where the intercept is not sensible, not important, तो आप इसको ignore कर सकते हैं. For all the time, slope coefficients are very much important compared to the intercept, unless कि उसकी अपनी कोई importance हो. बीटास जो है ये कोफिशिएंट्स हैं उसके, कि जौन सी वेरिएबल्स हमने यूज की हैं इस मॉडल के अंदर, तो उसके कोफिशिएंट्स हैं. जो रिग्रेशन मॉडल के कोफिशिएंट्स हैं वो यही है. एज इन ईयर्स जो है वो ये वाला वेरिएबल है, और इसका ये मतलब है कि इफ एज इन ईयर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, जो कम्युनिटी है वहाँ पे जो रिसर्च करने जा रहे हैं, वहाँ पे अगर एज इन ईयर्स इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट से बाय 1 ईयर,
So it will influence the income of the individuals, say by 551 rupees. So this is how we can interpret it, keeping the effect of all other variable costs. One compare. I think in this case will be interpretation of the intercept. आरिफ आपके जो क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर, ये बहुत इजी से गुजर जाता है, सो कोई क्वेश्चन आप करना भी हो तो थोड़ा हल्का रखें कि मुझे उस पर नजर पड़े। हाइपोथेसिस देखिए कोई और आ गया है इसमें, 1 मिनट कमेंट ऑन इट। Intercept don't have meaning, or you can't interpret them in most of the cases, as you have also mentioned. Okay, ठीक है, सही बात है। Income consumption warrant to explain if a person has zero. हाँ, वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे ये sensible है, जहाँ पे ये meaningful है, so we must interpret it. If it is not, if it is otherwise, so we may ignore it. ठीक है, कर सकते हैं। कोई और है, आमिर सलीम। It's always confusing for me to interpret intercept as interpreted as expected value of dependent variable when the value of the independent variable is zero. Income consumption model, I explained that if a person has zero income, his consumption will be based on age weight model. Yes, yeah. इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई from its theory, from its theoretical importance, you may identify what is the sense of intercept in a quantitative model. If it is sensible, if it makes sense, so for obvious reason, we take into account its size, its magnitude, its sign, as well as its statistical significance. Just income consumption model में था वहाँ पे, because when you don't have income, so it doesn't necessarily mean that you will not spend on your different kinds of needs. So it must be positive, and which makes sense. So वहाँ पे हमारे लिए बड़ा important है, जैसे आपने कहा, कुछ cases में नहीं होता. So it's not, there is no hard and fast rules. लेकिन आप देखें जरा कि whether it makes sense, whether the theoretical importance of these variables is all there. If not, तो फिर आप इसको ना करें। ठीक है, अच्छा जी, और क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच मोहम्मद रसूल साहब। ओके ओके, थैंक यू। जी जी, क्विज़ एक्सपेरिमेंट क्या कहना चाह रही हैं आप सभी? हैं you need an explanation for it, or you say कि भाई ये वाला जो intervention था, it was based on quiz experiments, तो I'm not sure कि आप क्या कहना चाह रही हैं। Yes, mixed methods जो है पूरी एक अलहदा उसके ऊपर वो है कि we can mix the quantitative as well as qualitative methods. For example, agar if your first question is that why a particular situations is experienced, and you don't know about the relevant factors and variables, then for obvious reason, particularly the qualitative study will be more appropriate. Once you are able to identify the factors, the relevant factors, the components, the variables, and their interconnection. So if you next conduct a quantitative study on it, so the second question or set of questions may be set on that. So that is my point. A combination of quantitative, qualitative study can be done, and it's happening, and it's relevant in most cases. जी जी, सलमा आप ठीक कह रही है कि hypothesis, the statement which want to be true or disprove, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। जी, और कौन? If data is missed up to 10 years, then what we will do? Yeah, it depends on your total numbers of observation. अब्दुल ज़ाहिर, तो देखना होगा कि आपके पास total number of observations कितने हैं। अगर आपके पास 200-300 के observations हैं और फिर जो है
उसमें से 8-10 साल का डेटा नहीं है तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं आसानी के साथ उस पीरियड को। अदरवाइज वी डू हैव सम अदर स्टेटिस्टिकल प्रोसेसेस, इंटरपोलेशन वगैरह, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और कितना इससे रिजल्ट इन्फ्लुएंस होगा, वो अलहदा अपनी जगह पे एक मुस्तकिल वो काम है। तो आप इंटरपोलेशन वगैरह से वो मिसिंग डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। Your analysis will be the interpretation of the intercept. इसमें यहाँ पे as the intercept is not sensible, that is why see that. So it's in this case it's not sensible. For example, if an individual is not part of the credit program, if the level of education of an individual is 0, if the age of the individual is 0, so 0 age means it doesn't make any sense that जो सड़ी तत्व सीजने के वो credit नशे वाला को, so that is why it doesn't make sense that when we make an assumption about the rest of the variables are all variables that if it is equal to 0, so ये sensible नहीं है, that is why इसका intercept जो है it's not sensible. Quasi experiments जो है वो ऐसी experiments होती हैं, for example if we look at two experiments, so full-fledged जो है वो scientific experiment, quasi experimentals designs जो है वो इस तरह से होती हैं जहाँ पे experiments करते हुए आपका कंट्रोल कुछ होता है चीजों के ऊपर और कुछ कंट्रोल नहीं होता। तो if this is the situation तो इसको कहते हैं quasi experimental। जैसे हमारे इस केस सिनेरियो में था, क्यों था? क्योंकि हमने देखा कि एक पॉवर्टी की डेफिनेशन के ऊपर तो हमने तमाम लोगों को आइडेंटिफाई किया, लेकिन हमने कुछ को लोन की फैसिलिटी दी, कुछ को नहीं दी, लेकिन एट द सेम टाइम हमने उसके ऊपर एक कंट्रोल नहीं रखा कि बाकी सोर्सेस से वो लोन नहीं ले सकते, बाकी सोर्सेस से जो है वो उनकी जो एक्सपोजर है उसके ऊपर कोई नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, फैमिली के अर्निंग में कंट्रीब्यूशन के ऊपर उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया, तो इसलिए हमने पार्शियली इसको कंट्रोल किया और पार्शियली नहीं किया। दैट इज व्हाई इट्स ए क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में ये फुल नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में ये एक्सपेरिमेंट्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल है जहां पे हर चीज आपकी कंट्रोल में होती है। टेम्परेचर कितना किसी पौधे को देना है, सनलाइट कितना देना है और कितना एक्सपोज करना है इसको रियल वर्ल्ड में सिचुएशन को, नेचुरल एनवायरनमेंट को, तो वो वहाँ पे पूरा कंट्रोल होता है। लोगों के ऊपर अमूमन इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी फुल कंट्रोल उनके ऊपर होती नहीं है। ठीक है, ये हो गया। Thank you, Samina Nas, for the compliment. Service type research has a promising future these days. आतिफुल्ला जो उसमें कहते हैं ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव की बात अपनी जगह पे नहीं होती। It's your research question which will determine whether quantitative techniques are more appropriate in your case studies, in your case, or qualitative studies. तो मेरे ख्याल में there is no inferiority or superiority of the quantitative or qualitative or qualitative or quantitative, लेकिन it's only a matter of appropriateness. Welcome, cause it was informative, kind in your name, sir. मैं शुरू में जिक्र किया था मैंने। I'm Dr. Zahoor Khan. I'm from Institute of Management Sciences. I'm working over there as Associate Professor of Economics and taking care of the BS Economics program as a coordinator. तो मेरे ख्याल में शुरू में मैंने शेयर किया था। Thank you. Welcome. Kindly tell us the team to share this specific. Okay, I'll request them to arrange if they can to share with you. Sergi, kindly kachar record kiri tasu تخبل بيا تاسو کې ما خیال دی یو بل سره نشي کوي کې یا چا کړی نه دی یا I'm not sure. Say kindly. Welcome, welcome, welcome. अच्छा, shortcomings बहुत सारी हैं. For example, the regression model is based on a set of assumptions. If you violate the assumptions,
while estimating the parameters of the model. So इसके अपने reliability और credibility के जो है वो issues आ जाती हैं, ठीक है? सभी मैंने अभी explain किया quasi experiments का थोड़ा सा अभी आपके साथ. If you still need more explanation, तो मुझे email कर दिखाएंगे जरा. email mention है इस lecture में. और कोई भी individual हो, if they would like further explanation or further reading materials or anything else, तो मेरी email जो है वहाँ पे mention है. मैं दोबारा से कर लेता हूँ, वो नोट कर ले, या मैं WhatsApp यहाँ पे वो लिखवा देता हूँ, आप लोग उसी के थ्रू वो कर सकते हैं. हाँ, वो इधर ही है. हाँ, ये मेरी WhatsApp है. आप काइंडली इस पे वो फर्दर अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या ठीक है. ये मैंने कर लिया. आई एम श्योर कि ये विजिबल है, सबको आ गया है ये WhatsApp एंड माय ईमेल एड्रेस. अच्छा, और क्या पूछ रहे हैं आप लोग? सॉरी. ईमेल शेयर हो गया है. आप जीशान आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे. ओके, ये मैं इनको बता देता हूँ. आई एम नॉट श्योर कि ग्रुप में ये कैसे करेंगे, लेकिन ये करते हैं मोस्टली. वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर द कम्प्लीमेंट. मेरे ख्याल में बाकी क्वेश्चन कोई नहीं है आप लोगों का. This was all Greek. So, yeah, I do understand. There's legal. I do understand it. It was a stuff from the quantitative thing. Yeah, but ये है ही इस तरह से बस. What can I do? चले. I tried my best कि मैं जितने simple form में आप लोगों के साथ इसको कर सकूं, तो I tried my best. लेकिन इतना ही पॉसिबल था. ओके हयातुल्लाह, थैंक यू वेरी मच हयात. I tried to get along, but all the end I lost the track. No issue, Mudassir Shah. If you need any further explanation, anything else, तो ये मैं WhatsApp भी आप लोग के साथ शेयर कर लिया. मेरी email भी है यहाँ पे, आप लोग देख लें. तो we can further have a touch with we will be in touch inshallah with each other if you feel कि आपको further explanation चाहिए. That depends. Adnan, जो आप पूछते हैं कि इंटरसेप्ट की जो इम्पोर्टेंस है, that depends. अगर इसकी कोई theoretical importance है और इसकी कोई logical sense है, so in that case we must interpret or intercept as well. If it is otherwise, so we can ignore it. Thank you, Mohammed Arif, once again. Share the difference between constructionism and constructivism and constructivism. यही है constructivism and social constructivism. यही है कि constructivism in general, that reality can be constructed, and social constructivism, that reality can be socially constructed from the social phenomena, from the social attributes. It can be constructed. So this is the difference between these two. Cheers, Sada. So the way you explained was very impressive, Sheila. So thank you very much, Sheila. What's the importance of intercept? ये अभी अदनान मैंने बता दिया आपको. मेरे ख्याल में अभी आपको समझ आ गया होगा. From literature background. Thank you, Sayyid Mudassir Shah. Thank you very much. Quantitative method primarily based upon the research. Yes, of course, it's based on your research. The nature of your research question will determine which kind of research investigation you need, whether it is qualitative or not. If it needs if it is exploratory kinds of things, where the things are not clear and you need to explore different dimensions and indicators and aspects of a particular
problem or phenomena, then of course qualitative is the most relevant one. And if all the things are already defined, you need to link it or you need to apply it to a new instance or situation, then quantitative mostly. That depends on Sabiha. I'm not sure who avoid quantitative method. It depends. People look at to their strengths, and if their strength is qualitative, so they go for that kind of things. And if their strength is quantitative, so they mostly. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जहाँ पे मजहब की equations उन्होंने बनाई है, religiosity की जो equations उन्होंने बनाई हुई है, because they are good in quantitative things. It was a great session. Thank you, Najim Khan. Thank you very much. Okay. Depends. Across the different disciplines, Muhammad Jamshed, different kinds of techniques. For example, quantitative, mostly within the social sciences in psychology and economics. अगर हम दूसरे उसमें देखें, even sociology में trend है quantitative का, और दूसरे उसमें से अगर हम देखें anthropology वगैरह और दूसरे जो disciplines हैं उसमें से. So that depends, and mostly depends on the nature of the research questions you're trying to investigate. Welcome, Sabiha. Quantitative philosophy. I am not, I'm not a student of philosophy, so and I can't offer an opinion, a definition of what I'm not expert in. So I'm sorry, I'll not be capable to give a definition of philosophy in my own understanding. No issue, Aisha. ये link मैंने दी है यहाँ पे, email है. If you need any further explanation, so we may keep it continue. It's qualitative. Shirzada, it's qualitative constructivism, because you're trying to create reality from the perception of the people who are experiencing a particular phenomena, problem. So socially constructed realities comes under the headings of that qualitative researches. जी मैंने शेयर किया है आखिर पे ये लिंक. आप देखिए जरा ये क्रिसवेल की जो बुक है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड्स की. इट्स वेरी वेरी comprehensive book on all these different aspects of these researches. वो लिंक मैंने नीचे वो फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं. उसकी स्लाइड हो जाएगी शेयर. क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स. जी मैंने वो शेयर की हुई है. मेरी स्लाइड के आखिर पे वही है. So I have the estimated model as my hat 15 revised test score x is the 3 months. ये इसी केस में फिर आपका जो मॉडल है वो मोहम्मद आरिफ, वो लगता है कि आपने there is you did some sort of mistake, क्योंकि टोटल से तो ज्यादा वो नहीं हो सकता. y hat is 50 plus 5xi, तो वो आपके कंस्ट्रक्शन में, because the way you constructed your model probably it has some misspecification. तो वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि which kind of misspecification you have done with it. तो वो करेंगे तो अंदाज फिर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. वो बुक मैंने मेंशन की हुई है जाकिर हुसैन. Anthology, it's basically a branch of philosophy which deals that what exists and what is real. तो ये बड़ा important है because it defines your research philosophy. इसलिए हमने थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डालनी. So thank you.
मेरे ख्याल में if we are done with it, I think your questions are mostly repeating. So if we have done with it, so we may leave. If you feel okay with it, so we may leave. बाकी अब मुझे बताएं. If still you need further time, so I can spend some further time. Okay, okay, okay. Thank you very much, Nasli, Sean, Sherzada, everyone. Thank you. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Manana, dear Manana. Thank you, everyone. Jazakallah. बस off वो करो जी. Kindly the slides these are share किए हुए. And this is my जो है वो email is it's mentioned over here. It's my WhatsApp number. So if any one of you needs further explanation or anything else, additional material, so we may communicate with each other. Okay, thank you everyone. Jazakallah khair. بس بقى. Okay, Jazakallah. The stop button. The recording which has already kind of like a shuru ke so kilau kalo bilke agam option में टिक के जिसको सो कम कहीं न कहीं दे परवाना कहीं no अगें न होता kindly दा गया like दा okay kana हाँ ठीक है जैसे कि जदी दा recording